Hello everyone. It's nice meeting you all in this evening. So we are now going to start our session. One second. I think I am audible properly. Yeah. So we have with us today Mohit Bhuteria ji and Mayur Agrawal. So on this very important topic, we have with us today Ranjit Agrawal ji. So Ranjit ji, it's a very privilege to be with us. First of all, we want to hear something from Ranjit ji. After that, we will start our today's session. Ranjit ji, over to you. Thank you. Very good evening to everybody, and thank you the convener of this study circle, and Sandeep Savaria, Mohit Bhuteria, Mayur Agrawal, and all the respected members of this study circle. Good afternoon to everybody. It's my privilege that we are connected through Zoom on this very important topic on company law, corporate law. So many issues are there, and one more important issue is also there, that the institute is also come out with that 2-3 important issue related to the audit quality. Like one aspect, the issue already published that audit quality maturity model. So they have identified the audit quality indicators, which we call AQI, and on the basis of this AQI, they have framed some guideline how the quality of the firm will be judged, and that's why they have renamed as a audit quality maturity model. It is already published by the Digital Accounting Assurance Board. So this is the very important in the terms of the quality of the audit the members has to do. And if you see the SQC1, where the quality of the firm, quality of the audit is considered, so this AQI will be a benchmark to judge the quality of the firm, how they are discharging their professional duty. And that's why for the members, you must go through that AQI, and on the basis of that, you can enhance the quality of your firm. And today, the Mohit Bhuteria and Mayur Agrawal, they will deliberate on various nitty-gritty of the company's law, corporate audit. So that will help our members to enhance their quality of audit in this regard. There are various other issues, multidisciplinary has come, so many networking guideline has come, corporate form of practice. So we can discuss once another time whenever we can have that session. But these are the very important developments as far as the institute is concerned, and I hope you all are aware. So we can discuss later on also. I wish all of you a very good learning experience today. Thank you. Thank you, Ranjit ji. Now requesting Hari Ram ji to please address your special address to the session. Ram ji, are you there, sir? Yeah, I'm here. My video is not starting anyway. Through audio, I am just connecting and just please. addressing. Friends, our Central Council members here, Ranjit Kumar Agrawal, convener of this study circle, Mr. Sandeep Savaria, speaker of the day, Mohit Bhuteria, and CM Mayur Agrawal, along with past conveners of our study circle, executive committee members, as well as other members, delegates attending this today's seminar. Good afternoon to all of you. Friends, our dynamic, energetic convener, Savaria ji, has put very two important topics for discussion on today. These two topics, as we see, are important compliances under the Companies Act 2013, as well as common errors in Schedule 3. Friends, the second one, common errors in Schedule 3, is related to some lackness in compliances under Companies Act. So as soon as we miss certain compliances, yes, online. Also some common error in Schedule 3 we are incurring. So we are making a blunder, and those blunders are recorded in the history of the company's records, financial records, and those records are being filed. Those financial statements are filed with MCA, with income tax, with banks, and with other statutory auditors. Gone are the days when the company used to prepare several series or rather sets of balance sheets. Nowadays, that is far away the things.
So now the companies are preparing the single balance sheet, and all those balance sheets, the same balance sheet is being filed at one places or other. And the way the technology is increasing day by day, and if honestly we can see that whatever income tax department is developing in this their new software, so what does it aims at? If we have any idea about that, they are aiming at this software which will link all the different sites of government of India, that is, be it customs, be it GST, be it income tax, or be it MCA, or be it any other uh, this site. All the sites or any officer of any department can access the data which have been filed with different department. It may not be available to the general public at beforehand, but sooner or later it will be available to different authorities like banks and other also. But for the time being, intra department or inter-department, these are two different modules of this software which the all the departments are using. So whatever is available to one department for the other department can be very much accessed. So once these are being activated, be sure that those who are doing errors, knowingly or unknowingly or intentionally, whatever may be, knowingly, unknowingly, or intentionally, so they will be caught, and penalty at one department will be informed to other department or will come to the knowledge of other department. So it will be a big uh, hurdle, big headache to the these business organizations, those who are doing these errors or mistakes, whatever you call it. So we the professionals have got a prime responsibility to not only to save the clients but to save ourselves also, because at one place or the other we are declaring, we are signing, we are asserting the things. So directly or indirectly, at one place or other, we the professionals are also responsible for that. So keeping in that mind, we should be aware that where we are lacking or where we are doing the errors, so or where we do have required to comply and not making the compliance. Because in today's time, the time, the notifications, circulars, press release, modification, notifications, bill, draft, all the things are pouring in every day. Every morning we are seeing these updates and all, but we are unable to keep a track on all these amendments, changes, or notifications, etc. And the more important and rather more difficult is the date of implementation of those changes, because some changes have been made in the a particular year budget, but the date of making that effective of those changes are not notified. But the general parlance in the public understand that okay, the bill is passed, that means all the provisions have been passed, but that is not true. Some of the provisions which have been in last year budget has not yet been notified till date. So all these aspects are there. So I hope Mohitji will throw some light on those aspects also. And Mayur is there. So both the speakers will be trying to make our life easy. So many thanks, and congratulations to both the speakers to be with us on Central Kolkata CA Study Circle platform. Thank you. Over Thank you, to Ananda. Ramji, for the special address to the session. Uh, Now requesting, as our both the speakers are our own speakers, Kolkata based, we know very well, but just requesting Surbi to please introduce our both the speakers formally to the August gathering. Yeah, Surbi, Okay, to you. Sandeep ji. Thank you, Sandeep ji. Uh, Thank you for giving me this opportunity to introduce both these speakers. Well, Mohit ji and Mayur ji are very well known. They don't need any introduction. Still, I'll give a brief about them. So Mohit ji is an insolvency resolution profession, and he is also a registered valuer.
He's a managing partner currently at AC Bhuteria and Company, and he has been a special invitee for Expert Advisory Committee of ICAI. He is also a co-opted member in study group of ICAI, and he has handled more than 1,000 statutory audits of PSU banks and private sector companies. He has contributed articles in various journals for different study circles, and he is one of the key contributors in technical guide on functioning of audit committee issued by ICAI in 2018 and guidance note on CARO 2016. I welcome Mohitji to address us on the topic today, and I would also like to introduce Mayurji now. Mayurji is a CA, and he is presently also a registered valuer of IBVI, and he is also a certified concurrent auditor and a ESA qualified. Mayurji is a regular speaker and has delivered more than 100 talks on topics of professional interest at various forums, including industry, trade, association, and professional forums. He has also written a lot of articles on various professional and business journals. I also welcome Mayurji to address us and enlighten us with the topic today. Thank you. Over to you, Sandeepji. Thank you. Thank you, Surbi, for introduction of our today's speakers. Now requesting Mohitji to please start the deliberation on common errors in the Schedule 3. How we should deal with this Schedule 3, some changes in it, and how we can proceed for the last year audit closing. Yeah, yes, sir. Over to you. Yeah, thank you so much. Thank you, Surbi, for the nice introduction. Convener of the study circle, Sandeep ji, Hariram ji, eminent Central Council member, Ranjit Agarwal ji, my friends. I thank you, Central Kolkata Study Circle, for inviting me to deliberate on the common errors in Schedule 3. So let me start with as to why and what is the importance of this Schedule 3 as far as we auditors are concerned. If we see Section 129, Section 129 of the Companies Act 2013 says that every company shall prepare financial statements in compliance with accounting standards, and the form of presentation shall be Schedule 3 or such other forms as may be prescribed for different class of companies. 129 subsection 7 says that if the company or its officers fail to comply with the accounting standards or the format of Schedule 3, then they are liable for imprisonment or fine to the extent prescribed therein, and the fine ranges from 50,000 to 5 lakhs. So not only is the company responsible and liable for preparation of financial statements in accordance with Schedule 3 as well as accounting standards, the liability is even fastened upon the auditors. So many of us know that over the years, if we see our practice over the years, many of us are practicing, like Hariramji has been practicing for more than 20 years, Ratiji is practicing for more than 20-25 years. So we have seen in the course of our practice that in case we were not complying when it was 1956 Act, the Section 211 or the accounting standard, or when it comes to the current law of 2013, either we are not complying with accounting standards or Schedule 3. Notices are issued by MCA. In around 2018-19, around 800 odd notices have been issued by MCA to the company for non-compliance with accounting standards, as well as Schedule 6 of the old Act, repealed Act 1956, as well as for non-compliance with accounting standards notified under Section 133, as well as Schedule 3 of the current Companies Act 2013. Now, what is the remedy? The remedy lies that you have to either go for compounding or you have to fight the case before the Honorable High Court. What the MCA will do, once MCA figures out that these are the final list of violations of 211, 129 and Schedule 3 of the Companies Act 13, it will
initiate criminal proceedings against the company as well as against the auditors in a court of law, in a criminal court. The company as well as the auditors have the option to go for compounding of the offense or alternatively to fight it before before the appropriate court. So liability is fastened upon each auditor as well as auditee, and therefore in the interest not only of the auditor but also of the auditee, company must ensure that the auditor must ensure that it is well complying with those Schedule 3 prescriptions of Schedule 3. So we'll take certain cases, and these cases we have taken from the common cases reported either by the Financial Review Reporting Board of ICI or the Quality Review Board of common certain errors which have been noticed in financial statements and which have been found to be non-compliant with Schedule 3. So let us take the first case study. So if we see the first case study, so what has happened in this case, there is a company which had interest income as well as interest expenses. So what it did, it netted off this interest expense with the interest income with the interest expense, and the net amount of interest expense was shown under finance cost. Therefore, the question was whether such accounting treatment is proper or not. So in this regard, what was the view of the institute? The view of the institute, or our view, we can say, as we see from guidance note on revised Schedule 6 or guidance note on Schedule 3, that finance cost shall be classified under the different heads: interest expense, borrowing cost, applicable gain, and other income shall be classified as interest income in case of a company other than a financial company, dividend and net gain and loss, and other operating income. So these are the classification of finance cost as well as other expenses when it comes to the financial statements. So once they have said that they should be separately classified and disclosed in the profit and loss account under the head finance cost, under the head other income, and once you are not following with this classification, it is said that it is viewed that Schedule 3 has not been complied with, or Schedule 6 of the erstwhile 1956 Act has not been complied with. So that is very important that we should show both interest expense as well as interest income separately. One point more while we are dealing with this case study, they have talked of dividend income. You see, when we talk of dividend income also, such dividend income normally may come from either long-term investments, it may come from current investments, or it may come from stock in trade. So what we have seen in many financial statements, they just show dividend income without giving the classification whether this dividend is from long-term investments, or it is from current investment, or it is from stock in trade. So this is a requirement of AS 13. Even in case of interest income, such classification has to be given whether interest income is from long-term investment or interest income is from current investment. And when it comes to other interest, the nature should be specified in each case. Now, when it comes to gain loss on investment, in many of the financial statements, we see just a line showing profit on sale of investments, or long-term capital gain and short-term capital gain. This is not an appropriate representation. So what are the different types of investment as per accounting standard AS 13? You may have a current investment or you may have a long-term investment. Therefore, if any profit or loss arises from disposal of any investment, whether it be long-term investment or current investment, they have to be shown under the appropriate nomenclature. We have to disclose as either profit on sale of long-term investments or profit on sale of current investments. So we cannot say that profit on sale of investments or under long-term capital gain or short-term capital gain. That will be in deviation to AS 13. Each of these mistakes which I have said will be treated as a separate mistake, and it will be treated as non-compliance not only with Schedule 3 or as well as non-compliance with AS 13, and then these penal consequences will follow. So when I am dealing with some case studies in between, I'll also take up some other identical situations, some other situations which has come to the knowledge of the board, because I have not been able to jot down all the cases. So again, this is an important case study, like trade receivables. So when we have to classify trade receivables, Schedule 3 prescribes the manner of classification.
it should be either unsecured or it should be secured. Unsecured may be secured considered good or unsecured considered doubtful. Now, what has happened in this case? He has stated the financial statement that stated trade receivables more than 6 months and other receivables. The question is, what is the prescription in Schedule 3? Is it okay if we write trade receivables, say unsecured considered good, more than 6 months, other receivables? So this classification is not correct. So what they say, Schedule 3 or Schedule 6, whatever it may say, that the trade receivables should be classified in two heads. Number one, trade receivable outstanding for a period exceeding 6 months from the due date of payment. So it's not like more than 6 months. More than 6 months does not give the inference exactly whether it is more than 6 months from the bill date or more than 6 months from the due date. So earlier, if you remember the old Schedule 6, it talked of debts which are outstanding for a period of more than 6 months, not from the due date, but from the invoice date. But now the current Schedule 3 or the revised Schedule 6, which was there in the time of the 1956 Act, they said that the trade receivables outstanding for a period exceeding 6 months from the due date of payment. So most of the prescription which are given in Schedule 6 is similar to what is given in the present Schedule 3. So we have to classify trade receivables outstanding for a period more than 6 months from the due date of payment and other trade receivables. So another case study when it comes to long-term borrowing. So this is very important because in case of long-term borrowings, we have to provide a number of details. So in this case, a long-term borrowings comprised of vehicle loans and unsecured corporate intercorporate loans. So what is a long-term borrowing? Anything which is due from more than 1 year from the date the borrowing was taken. So what details are we to state for these long-term borrowings? So Schedule 6 says that in case of long-term borrowings, we have to state the terms of repayment of term loans and other loans. A long-term borrowing may be a term loan, it may be another loan. So terms of repayment has to be stated. Guidance note further state that disclosure of repayment terms shall include the period of maturity with respect to balance sheet date, number and amount of installments due, rate of interest and other terms and conditions. Therefore, let us take in respect of, say, we have vehicle loans, car loans. So car loans we have taken, say the amount is 1 crore rupees of car loans, and this is secured by hypothecation of various cars acquired under some installment scheme. So these vehicle loans will be classified under the head secured loans as vehicle loans obtained from bank or from any other company, and it will be stated that these are secured by hypothecation of vehicles acquired under the respective agreements. Now further, the rate of interest is also required to be stated. So the number of loans may be large. So we may give a rate of interest that varying between say 8% or to 10% compounded interest payable quarterly. That can be the applicable rate of interest. Now another thing is required, that what is the date, period of maturity and number and amount of installments due. So generally what do? We give an year wise that what is the total number of installments due as at balance sheet date. So say as on 31st March 2021, the number of installments which are due to be paid in future till say another 5 years comes to say 200 installments. So we say the total number of installments which are outstanding are 200, and then we have to give what is the year wise breakup. So in 21-22, how many installments and what is the amount which is payable? In 22-23, what is the number of installments and how many, what is the quantum amount which is payable, so on and so forth. This tabular form of presentation is required to be given. But if the rate of interest varies substantially, then this table has to be prepared separately to make it a meaningful representation. Other significant relevant terms, if any. So if there are other significant relevant terms of this agreement, if they are further guaranteed by say directors of the company, or if there is any other significant relevant terms that you cannot say you have acquired these vehicles which are secured, and say this is not only secured against vehicle, but these are also secured against certain fixed deposits. Again, that is also required to be stated. So in case all those disclosures are not given,
if you are only giving the nature of term loans, but you omit to give the rate of interest, you omit to give the other relevant terms and conditions, then it will be taken as a violation of Schedule 3. So there was a case where, if you see AS13, we have a current investment and we have a long-term investment. So what is a current investment? A current investment is one which is readily realizable and is intended to be held for not more than 1 year, 12 months from the date of acquisition of investment. And what is a long-term investment? It is intended to be held for more than 1 year from the date of investment. So what is a trade investment? The term trade investment is not defined either in the Companies Act nor it is defined in Schedule 3. The guidance note defines the trade investment to meaning an investment which is intended investment made by the first company in the second company to promote its own business. Therefore, if I make a investment in another company to promote my business, it is a trade investment. Therefore, for investment companies which are in the acquisition of shares and securities, and if they make investments, then that is to promote their own business, because their business is what? To make profit, to earn dividend and to make profit by selling of those investments. So one you can call as a trade investment. So therefore, say if there is a steel company and it goes for backward integration and it sets up a sponge iron unit, or it sets up an iron ore crusher, because the raw material for the steel unit is the sponge iron, the raw material for the sponge iron is the sized ore from the crusher. So let us say if a company of Tata Steel sets up these type of subsidiaries or associates, then it is a trade investment, because these output from these are basically in the scheme of backward integration, and they will be fetched by Tata Steel in its own business of steel production. So therefore, a question arises whether a current investment can, and like an investment in money market. So one does do investment in money market. These are basically government papers, and we do park these investments which are surplus in nature. Therefore, the question arises whether you can say this as a current investment or not. So these investments are not current investment because they are not intended to promote the trade or business of the company which has been making the investment. But basically, this investment is nothing but something which you are parking your surplus funds not immediately required in the business of the company. So these are not trade investment. So when an investment is made, if you see the investment schedule, we have to classify whether it is a trade investment or whether it is a investment other than trade investment. Non-classification of an investment into trade or other than trade, again, it is a violation of Schedule 3, for which you will be liable under 129 subsection 7. Now, so this was a case where other current liabilities, under the head other current liabilities, trade payable for goods and services was shown. The question arises whether you can classify trade payables under the head other current liabilities, or whether trade payables will be a separate line item as per Schedule 3. Therefore, if you see Schedule 3 said that current liability should be classified under the following heads: short-term borrowings, trade payables, other current liabilities, and short-term provision. So you cannot, for trade payables, you have a different line item. You cannot classify the same under the head other current liabilities. Therefore, classification of trade payables under the head other current liabilities is not conforming to the prescription of Schedule 3, and accordingly it is a non-compliance of Schedule 3. So in between, if you have any questions, you can put in the chat box, or you can even ask me to, make a discussion a little interactive, as you may. Sandeep ji? Yes, sir. तो अगर बीच में क्वेश्चन भी आए तो हम लोग ले सकते हैं, तो थोड़ा इंटरैक्टिव रहे. अगर मेंबर का क्वेश्चन से कोई और क्वेश्चन अराइज होता है तो हम उसको ले सकते हैं, जैसा आप उचित समझिए. नहीं, कंफर्टेबल रहेगा सर ये इंटरेक्शन. यदि कोई भी मेंबर्स के अभी तक यदि कुछ क्वेश्चंस हैं तो इट विल बी इंटरेक्टिव एंड लाइवली सेशन, तो आप इंटरेक्ट कर सकते हैं. या कोई का भी क्वेश्चन हो तो आप बीच में you can raise your hand and or you can put your questions. Yeah. So
we come to a next case study. तो यहाँ पे क्या था? There is a long-term borrowings, and long-term borrowings में there are certain amount which was due in the next financial year. तो से हमने 12 लाख रुपया का लोन लिया है और हम बोले 1 लाख का किस्ती देंगे 12 साल तक. So what this gentleman, this company had done, वो पूरा का पूरा long term borrowings में 12 लाख रुपया दिखा दिया और बोला कि out of this 12 lakh एक नोट दे दिया 1 lakh is payable in financial year 21-22. The question arises whether it is a correct classification or not. Now अगर हम schedule 3 का देखें तो एक है कि what is a current liability and what is not a current liability. So a liability shall be classified as current if it is due for settlement within 12 months from the after the reporting date, और other liabilities are non-current. तो ये 1 लाख रुपया जो उसको 21-22 में देना था, that is a current liability. तो इसने उसको non-current liability में long term borrowings में दिखा दिया. Rather इसको उसको दिखाना था current liabilities के अंडर में under the head current maturities of long term borrowings. So since this was not shown accordingly, it was viewed that Schedule 3 has not been complied with. ये एक बड़ा important aspect है, क्योंकि अगर हम देखें हमारा पुराना जो Schedule 6 था उसमें sundry creditors का बात था, but जब revised Schedule 6 आया और even Schedule 3 है तो हमारा यहाँ पे sundry creditor के जगह trade payable आ गया. So what is the difference between sundry creditor and trade payable? First we should understand. Sundry creditor includes amount which are payable for goods supplied or services received or other contractual obligations. तो यहाँ तीन चीज है, goods supplied or services received or other contractual obligation. But when it comes to trade payable होता है in respect of goods supplied or services received. Other current contractual obligations does not form part of sundry creditors. Therefore, अगर हमारा कोई dues है towards liability for capital assets, अगर हमारा कोई dues है for provident fund ES9, so this will not form part of trade payable because it is not in respect of goods received or services rendered, but it is in respect of other contractual obligations like PF, ESI or say capital creditors. But these were included under the head sundry creditors. तो आज के दिन अगर हम अदर करंट लायबिलिटी में वर्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखाते हैं तो फर्स्ट वो गलत हो जाता है, बिकॉज देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू शो सन्ड्री क्रेडिटर्स, द रिक्वायरमेंट टू शो इज ट्रेड पेबल्स, एंड सारे सन्ड्री क्रेडिटर्स आर नॉट ट्रेड पेबल्स बट ऑल ट्रेड पेबल्स आर सन्ड्री क्रेडिटर्स. तो अब इन्होंने अदर करंट लायबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखा दिया. तो जैसे अभी हम लोग एक केस स्टडी पहले देखे थे, वहां था कि आपको अदर करंट लायबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर नहीं होगा बट ट्रेड पेबल एक सेपरेट लाइन आइटम होगा. तो पहले तो एक गलत हुआ कि हमने सन्ड्री क्रेडिटर दिखा दिया और दूसरा गलती हुआ कि उसको हमने सेपरेट लाइन आइटम नहीं दिखाया. तो दीज आर द टू मिस्टेक्स. तो अब क्वेश्चन आता है कि कैपिटल क्रेडिटर्स को हम कहाँ दिखाएंगे. तो जो कैपिटल क्रेडिटर्स है उसको हमको अदर करंट लायबिलिटीज में दिखा देना पड़ेगा. विद अदर करंट लायबिलिटीज में बी इन द फॉर्म ऑफ ड्यूज टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, इट मे बी ड्यूज टुवर्ड्स कैपिटल क्रेडिटर्स. तो वो अदर करंट लायबिलिटी में डिफरेंट लाइन आइटम्स बोल के आ जाएगा. यहाँ पे क्या था, ये one company has disclosed its investment as non-current investments under these different items, that unquoted equity instruments fully paid, investments in subsidiaries, investments in associates. So what are the different mistakes when it comes to this presentation? पहला mistake है, it has not distinctly classified investment as long-term or current investment. What is current and what is non-current, it depends upon your operating cycle. तो हमको non-current दिखाना है वो सही है, but AS13 के हिसाब से करंट भी है कि नहीं वो हमको, और लॉन्ग टर्म है कि नहीं उसको हमको सेपरेटली दिखाना है. एंड सेकंड मिस्टेक यहाँ पे है, दे हैव नॉट शोन वेदर इट इज अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट और अदर देन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. तो वो डिस्क्लोजर नहीं होने से टू दैट एक्सटेंट शेड्यूल 3 और ओल्ड शेड्यूल 6 हैज नॉट बीन complied with. So these are the two mistakes out here. Now this is very important. हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं बैंक में, which is say for 1 month duration, 2 months duration, 3 months duration. 1 second, Boyji, I think your slides are stopped at case study 6. 1 second. Case study 6 में slide stop हो गया. Oh, 1 second, 1 second. 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 1 second
ये अभी आ रहा है? हाँ सर, अभी ये आ रहा है. It was observed from the note. या तो Case study 8, right? या तो यहाँ है बैंक डिपॉजिट. दिस इज वेरी कॉमन इन ऑल बैलेंस शीट. So your fixed deposit may be a 3-month-old fixed deposit, it may be a 6-month-old, it may be a 12-month-old, it may be a 24-month-old duration का fixed deposit. The question first arises कि हम कैसे classify करेंगे? We have to first see the residual maturity. बैलेंस शीट पे रेसिडुअल मैच्योरिटी क्या है? अगर बैलेंस शीट पे रेसिडुअल मैच्योरिटी लेस देन 12 मंथ्स है तो इट विल गो अंडर द हेड करंट. अगर बैलेंस शीट पे रेसिडुअल मैच्योरिटी मोर देन 12 मंथ्स है तो इट विल गो अंडर द हेड नॉन करंट. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. तो गाइडेंस नोट बोलता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 बोलता है कि व्हाट आर कैश इक्विवेलेंट्स. Cash and cash equivalents are short-term investments with maturity of less than 3 months and which is convertible into the known amount of cash and which possesses very little risk as to its convertibility. तो अगर हम FD करेंगे less than 3 months maturity का, which is not subject to anywhere lien and it can be converted into the known amount of cash. जैसे 10 लाख का FD है तो हम जब मैच्योर करेंगे तो 10 लाख प्लस ही मेरे को मिलेगा. So these are cash equivalents, and these are cash equivalents with respect to its original maturity. तो अगर हम 4 महीना का भी करेंगे तो it is not a cash equivalent, but it is a bank balance, but it is not a cash equivalent. So only short-term instruments जो less than 3 months है from the date of investment in that instrument, these are cash equivalents. अब क्वेश्चन आता है what happens to fixed deposit which are more than 3 months. तो अब हमको यहाँ देखना है अगर मेरा फिक्स डिपॉजिट मोर देन 3 मंथ्स है बट रेसिडुअल मैच्योरिटी एज एट बैलेंस शीट डेट क्या है. अगर मेरा रेसिडुअल मैच्योरिटी एज एट बैलेंस शीट डेट 12 मंथ से ज्यादा है देन इट विल बी शोन अंडर नॉन करंट एसेट्स अंडर द हेड अदर बैंक बैलेंसेस इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स. अगर मेरा रेसिडुअल मैच्योरिटी बैलेंस शीट डेट में लेस देन 12 मंथ्स है तो उसको हम दिखाएंगे कैश एंड करंट एसेट्स में दिखाएंगे और करंट एसेट्स का जो हेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसको चेंज करके हम कर देंगे कैश एंड बैंक बैलेंसेस. वो हमारा मेन बैलेंस शीट में आ जाएगा. उसके अंदर में 2 सब हेड आएगा, एक हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और एक हो गया अदर बैंक बैलेंसेस. और ये अदर बैंक बैलेंसेस में हम ये फिक्स डिपॉजिट जिसका रेसिडुअल मैच्योरिटी विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट है उसको दिखाएंगे. इसके सिवा हमको एक और डिस्क्लोजर देना है कि हमारे बैलेंस शीट में व्हाट इज द डिपॉजिट विद ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 12 मंथ्स. ओरिजिनल मैच्योरिटी नॉट रेसिडुअल. तो कल को हमने कोई एफडी किया है जिसका ओरिजिनल मैच्योरिटी मोर देन 12 मंथ्स था फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स बीइंग इन्वेस्टेड इन बैंक, उसको हमको अलग से दिखाना है which may be now under current asset which may have been earlier under non current asset but हो सकता है इस साल रेसिडुअल मैच्योरिटी के कारण वो करंट एसेट में है. तो हम अगर मेरा ओरिजिनल एफडी लेस देन 3 मंथ्स है बट इज सब्जेक्टेड टू सम चार्ज then it will not form part of cash and cash equivalent because it cannot be readily converted into cash. It has some lien. तो वो भी फिर other bank balances में ही आएगा. So this is all about cash and cash equivalent. So that was stated. The bank deposits with more than 12 months maturity need to be disclosed under other bank balances. The non-current portion of each of the above balances will be classified under other non-current assets. अच्छा या अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन एक चैट बॉक्स में विश्वनाथ मन्ना जी ने पूछा है, निधि कंपनी के केस में यदि डिपॉजिट रिसीव होता है मेंबर्स से देन वेदर इट शुड बी डिस्क्लोज्ड अंडर ट्रेड पेबल्स और अंडर बोरोइंग्स. दैट इज बोरिंग. जो डिपॉजिट्स है दैट कैरीज इंटरेस्ट तो वो तो बोरिंग्स हो गया. ट्रेड पेबल्स इज इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड, गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज रिसीव्ड. एक और क्वेश्चन सर उनका है, also that portion of deposit which are due for maturity within 1 year or savings deposits could be shown under other current liabilities. See, agar hum if I presume that those companies which you are talking are required to follow schedule 3,
So if deposits are more than, say आपने 5 साल के डिपॉजिट लिए, so that will be shown under long term borrowings, and out of this something which is payable within the next 12 months, say by 31st March 22, that will be shown as current maturities of long term borrowings. Right. Thank you. So we come to next point, revenue from operations. यहाँ पे क्या था, इन्होंने revenue from operations में profit on sale of assets दिखाया. तो therefore the question arises कि किसी कंपनी का काम है क्या एसेट बेच के पैसा कमाना, रेदर कंपनी तो उस एसेट से बिजनेस करता है और बिजनेस करके जो माल बनता है या जो सर्विस रेंडर होता है वो उसके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है. सो उन्होंने क्या किया, सम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सम फिक्स्ड एसेट्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में दे दिया. अगर हम शेड्यूल 3 और गाइडेंस नोट देखें तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कैन नॉट बी एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द कंपनी. देयरफॉर इवन शेड्यूल 3 सेज दैट कि इसको आपको अदर इनकम में क्लासिफाई करना चाहिए. अगर हम AS 9 भी देखें तो व्हाट इज रेवेन्यू, revenue is the gross receipt of cash from sale of goods or supply of services from the principal ordinary activities of the company. So sale of fixed asset is not my ordinary activity, so it should not have come under revenue from operations because that is not revenue from operations. So again there was a mistake कि profit on sale of fixed assets को हमको other income में ही दिखाना चाहिए. Right. So this was a case जहां पे हमने देखा कि हमने बैलेंस शीट में दिखाया है इन नोट्स व्हाट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में हमारे कुछ एडवांस दिखाए हुए हैं, लॉन्ग टर्म एडवांस में कुछ एडवांस से नहीं दिखाए हुए हैं. तो यहाँ पे ऐसा इन्फ्रेंस आया कि इस कंपनी ने नोट्स में दिखाया है कि मेरा कोई कैपिटल कमिटमेंट आउटस्टैंडिंग है, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट आउटस्टैंडिंग है. तो जब क्वेश्चन आया कि जब ये मेरा आउटस्टैंडिंग है तो मेरा कोई कैपिटल एडवांस भी होना चाहिए ऑब्वियसली. तो हमने जब बैलेंस शीट देखा तो हमको कहीं भी लॉन्ग टर्म एडवांस नहीं दिखा, तो हमने शॉर्ट टर्म एडवांस देखा, वहां शॉर्ट टर्म एडवांस था बट कैपिटल एडवांस का कहीं मेंशन नहीं था. तब आया एक क्वेश्चन कि कंपनी ने जरूर कैपिटल एडवांस को शॉर्ट टर्म एडवांस का किसी और हेड में जोड़ दिया होगा, जबकि कैपिटल एडवांसेस आर बाय नेचर नॉन करंट एसेट्स बिकॉज दे विल रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ अ नॉन करंट एसेट. क्योंकि अगर हम एडवांस ऑन कैपिटल अकाउंट देंगे तो इट मे बी फॉर अ परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट और इट मे बी फॉर अ परचेज ऑफ एन इन्वेस्टमेंट व्हिच अगेन बोथ आर नॉन करंट. तो appropriate head as per schedule 3 for capital advance is long term advance. तो अगर हमने नहीं दिखाया इसको लॉन्ग टर्म एडवांस में तो अगेन इट इज एन एरर. बहुत बार ऐसा होता है, हम लोगों ने भी बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखा है कि इस तरह का कैपिटल कमिटमेंट का नोट है बट बैलेंस शीट में कहीं कैपिटल एडवांस नहीं है. सो इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 कि कैपिटल एडवांस को आपको अंडर द हेड लॉन्ग टर्म एडवांस अ सेपरेट लाइन आइटम होना चाहिए, तो दैट वी शुड इंश्योर. मेनी कंपनीज कैपिटल एडवांस को अगर आपने ध्यान दें फिक्स्ड एसेट्स के अंडर में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिखाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स के बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में वो कैपिटल एडवांस जोड़ देते हैं, तो दैट इज नॉट अ करेक्ट प्रेजेंटेशन. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में वही आएगा कि जो एसेट आ गया है बट येट इट इज नॉट इंस्टॉल्ड और नॉट रेडी फॉर यूज, अगर है तभी वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आता है. जो पैसा एडवांस दिया हुआ है विच इज नॉट येट क्रिस्टलाइज्ड इनटू सम फॉर्म ऑफ एसेट and which partakes the character of advance only till the material is received, that should be shown separately under the head long term advances in the balance sheet. If you can see कि long term advance के अंदर एक current capital advance है, so to that extent it was stated that schedule 3 has not been complied with. अगर हम कोई कैपिटल एडवांस दे दिए हैं एंड से हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं कि भाई नहीं मुझे ये एसेट नहीं चाहिए, तुम मेरा पैसा वापस दे दो, एंड दैट इज विद इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि से मैंने बोला था कि मुझे 6 महीना में सप्लाई करो, अगर 6 महीना में नहीं आया तो हम आपको बोल सकते हैं कि विद इन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months मैं आपको जब भी लिख दूंगा, तो दिस कैपिटल एडवांस बिकम्स रिफंडेबल. तो वन इट बिकम्स रिफंडेबल, इट इज नो लॉन्गर अ कैपिटल एडवांस. तब आप इसको अदर रिसीवेबल्स में दिखा सकते हैं, अदर करंट एसेट्स में, बट टिल देन इट कैन नॉट बी शोन अंडर एनी अदर हेड.
सो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है कि हमने ट्रेड पेबल दिखाया है ड्यू टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड ड्यू टू अदर्स, और हमने एमएसएमई का डिस्क्लोजर भी दिया है। हमने दोनों काम किया है। तो यहाँ पे ट्रेड पेबल को हमने ड्यू टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम दिखा दिया, ड्यू टू अदर्स, और एमएसएमई का जो डिस्क्लोजर जो एमएसएमई एक्ट में वो पूरा का पूरा टेबल भी बना दिया। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें गलती क्या है। थोड़ा ध्यान से सोचें, कोई अगर इफ एनीबॉडी कैन से व्हाट इज द मिस्टेक हियर। हमने शेड्यूल 3 भी कंप्लाई किया, हमने एमएसएमई एक्ट भी कंप्लाई किया, देन व्हाट इज द मिस्टेक। कोई मिस्टेक तो दिखता नहीं है, बट एक बहुत ही फाइन मिस्टेक है, और वो मिस्टेक ये है कि आपने क्रॉस रेफरेंसिंग नहीं किया। तो जिसने भी पॉइंट आउट किया, दिस वाज पॉइंटेड आउट बाय सम मेंबर टू एफआरआरबी एंड दिस वाज एक्सेप्टेड आल्सो बाय द काउंसिल कि हाँ ये मिस्टेक है। सो ईच requirement of schedule 3 is that each note should be cross referenced to any of the part of the balance sheet or PL। तो चूंकि हमने ट्रेड पेबल दिखाया है बैलेंस शीट में और हमने एमएसएमई डिस्क्लोजर दिया है, so this should have been cross referenced। तो चूंकि ये क्रॉस रेफरेंस नहीं था, so then it is again said to be a violation of schedule 3। तो वेरी स्मॉल थिंग है। तो वैसे ही आप ध्यान रखें, जब हम रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर देते हैं तो AS 18 के हिसाब से एक टेबल बना देते हैं। सो देयर में भी हमने दिखाया आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस ट्रेड पेबल्स का, ट्रेड रिसीवल्स का। तो ट्रेड पेबल का नोट और ट्रेड रिसीवल का नोट को क्रॉस रेफरेंस कर दें इस रिलेटेड पार्टी का टेबल। क्योंकि हम ट्रेड पेबल या ट्रेड रिसीवल दिखाते हैं तो वहां हम रिलेटेड पार्टीज का भी वर्णन करते हैं। जैसे अगर हम लोन दिखाए हैं तो डेट ड्यू फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, समथिंग दैट लाइक as director or member। So please cross reference the table of the related party disclosure with the outstanding trade receivables and trade payables of related parties। अगर हम long term borrowings में भी जाएं तो there is a line item loans and advance from related parties, जो 31st मार्च को outstanding है। तो हम जब related party disclosure दें उसको cross reference कर दें। One more point when it comes to related party, जब related party का हम बात कर ही रहे हैं, please do not confuse with Section 188 related party disclosure and AS 18 related party disclosure। Section 188 में requirement है that you have to comply with 188 when it comes to related parties which are defined under 2 clause 76 of the Companies Act। तो वहां आपको ये है कि ये 276 का पार्टी से अगर हम कोई ट्रांजेक्शन एंटर करते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, और वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन 188 में है, तो हमको लॉ का कंप्लायंस करना है। दिस हैज नथिंग टू डू विद डिस्क्लोजर, दिस हैज नथिंग टू डू विद डिस्क्लोजर। तो ये एक सेपरेट है। और जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 18 के हिसाब से डिस्क्लोज करते हैं तो दैट इज जस्ट अ डिस्क्लोजर। वहां ये नहीं है कि आपने कुछ सही किया या गलत किया है। क्वेश्चन है, अगर आपने कोई रिलेटेड पार्टी जो AS 18 में बोला है कि ये AS 18 के रिलेटेड पार्टीज हैं, जो AS 18 में 5 रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है, आप उस ब्रॉड कैटेगरी में कोई ट्रांजैक्शन किए हो तो आपको ये डिस्क्लोज करना है। अब कुछ कॉमन एरर्स क्या होते हैं जो हम लोग नहीं देते हैं। अगर कोई मेरे रिलेटेड पार्टी ने गारंटी दिया है, डायरेक्टर्स हैव गिवन गारंटी, तो हम क्या करते हैं, लोन का शेड्यूल में लिख देते हैं द लोन्स आर गारंटेड बाय 3 डायरेक्टर्स। बस the secured loans from banks by way of cash credit are guaranteed by few directors या 3 directors। हम related party disclosure में guarantees by directors नहीं लिखते हैं। तो this is one mistake। Number 2, बहुत बार corporate guarantee देता है ग्रुप, तो हम उसको contingent liability में खाली दिखा देते हैं कि one of the associate company या one of the group company messer such and such has given a corporate guarantee, या हमने कोई के बिहाफ में corporate guarantee दिया है। So when I have given a corporate guarantee in respect of another company which may be a group company, हम उसका contingent liability का disclosure दे देते हैं। So that group company may be a related party as per AS 18, may not be a related party। अगर ये related party है as per AS 18 तो आपको दिखाना पड़ेगा कि corporate guarantee की company has given a corporate guarantee in respect of its associate such and such amount outstanding in respect of such corporate guarantee as on 31st March in such and such। ये देना बहुत जरूरी है। लास्ट मिस्टेक, मेनी कंपनीज क्या होता है, हमारे एक ऑफिस है, मेरी एक ऑफिस में
वो लिया हुआ है से संदीप सांवरिया प्राइवेट लिमिटेड में। संदीप जी की 20 ग्रुप कंपनी और है। तो ये सारे के सारे ऑफिस उन्होंने संदीप सांवरिया प्राइवेट लिमिटेड से बाकी की कंपनी को भी टेबल स्पेस दिया है फ्री ऑफ रेंट, अदर रिसोर्सेज दिया है, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ, टेबल, चेयर, फर्नीचर, कंप्यूटर, नेटवर्क, फ्री ऑफ चार्ज। तो दो सिचुएशन हो सकता है, एक सिचुएशन में आप चार्ज लेते हैं, एक सिचुएशन में आप चार्ज नहीं लेते। मैं कंप्लायंस में आता हूं, डिस्क्लोजर में सेकेंडरी। ये कंपनी मेरी एएस सेक्शन 276 में रिलेटेड पार्टी आती है क्या? तो अगर आती है तो हमको चार्ज करना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन नॉट एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज 188 बोलता है कि बेसिकली व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ 188, ट्रांजैक्शंस शुड बी ऑन आर्म्स लेंथ। तो अगर आर्म्स लेंथ नहीं है और अगर ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं है, तब आपको बोर्ड और शेयर होल्डर अप्रूवल लेना है। बट इसको हम रेड विथ 166 देते कि डायरेक्टर शुड एक्ट इन गुड फेथ टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द एसेट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो आपको कुछ प्राइस चार्ज करना चाहिए। तो इस प्राइस चार्ज करने के लिए एक आर्म्स लेंथ में एक प्राइस फिक्स कीजिए, फिक्स करके एक रिसोर्स शेयर एग्रीमेंट बनाइए और रिसोर्स शेयर एग्रीमेंट बना के इन सब कंपनी के साथ आप कुछ पैसा लीजिए एंड पे देम एंड कीप ऑन पेइंग द मेन संदीप सांवरिया प्राइवेट लिमिटेड। अब आपको ये देखना है कि therefore to that extent you have complied, you comply with 188। तो ऑडिट रिपोर्ट में हमको लिखना भी है 188 ना। अब ये जो पार्टी के साथ हम ट्रांजैक्शंस किए हैं, these may be related parties, these may not be related parties as per AS 18। तो अगर AS 18 के तहत ये रिलेटेड पार्टीज हैं तो हमको उनका नाम और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन प्लस आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल पेएबल बैलेंस शीट में दिखाना है। These are broadly 3 कॉमन मिस्टेक्स जब हम रिलेटेड पार्टी देखते हैं तब ये आता है, क्योंकि एट टाइम्स वी गेट कंफ्यूज्ड कि हमारे को ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है कि ट्रांजैक्शंस आर इन कंप्लायंस विद 177 एंड 188। दिस कम्स विद कंपनीज एक्ट 2013। दिस इज अ कंप्लायंस प्रोविजन, बट डिस्क्लोजर इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू AS 18। तो कल को ऐसा है कि हमने कोई ट्रांजैक्शन किया टू क्लॉज 76 का पार्टी से जो रिलेटेड पार्टी है, बट नन ऑफ द पार्टीज आर कवर्ड अंडर AS 18, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स में कुछ भी नहीं दिखाने का जरूरत है। सो दिस इज वन फाइनल पॉइंट। So we come to a next point. यहाँ पे क्या था? प्रेफरेंस शेयर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ जब हम कर रहे हैं तो हम कंपनीज एक्ट, preference shares are of two types, either cumulative or non-cumulative, right? When it comes to non-cumulative preference shares, तो preference share में आप अगर प्रॉफिट नहीं करते हैं, आप डिविडेंड नहीं देते हैं, आप लॉस करते हैं, तो ये लैप्स हो जाता है, आपको डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड करने का जरूरत नहीं है। बट when it comes to cumulative preference shares, आप डिविडेंड दें चाहे नहीं दें, दिस डिविडेंड्स कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग। तो आपने 1 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर इशू किया, 10% आपने डिविडेंड नहीं दिया तो 10 लाख का डिविडेंड एक्यूमुलेट हो गया। अगला साल भी आपने नहीं दिया तो 20 लाख हो गया। तो ये जो डिविडेंड है मेरा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में, इसको हमको एक सेपरेट हेड में दिखाना पड़ता है, एरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो अगर हम ये डिस्क्लोजर नहीं दिए इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, देन अगेन इट इज अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ शेड्यूल 3। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक ध्यान रखना है, जब हम EPS कैलकुलेट करते हैं, whether or not dividend has been declared, dividend pertaining to the current year, उसको हमको net profit after tax attributable to equity shareholders हम जब निकालते हैं तो profit after tax से हमको dividend less करना पड़ेगा, irrespective whether I have declared dividend or not, और उसी के बाद मेरा EPS निकलेगा। तो मैंने जो cumulative का दिखाया कि year 1 में 10 लाख हो गया, cumulative year 2 में 20 लाख हो गया, तो ईयर 1 में मैं EPS निकालने के लिए 10 लाख लेस करूंगा, ईयर 2 में भी 10 लाख लेस करूंगा। ऐसा नहीं है कि ईयर 2 में मैं 20 लाख लेस करूंगा, EPS निकालने के लिए मैं ईयर 2 में भी 10 लाख ही लेस करूंगा। So this was one important point. Next, I'll take another 10 minutes. मयूर जी भी ज्वाइन कर लिए हैं, तो अब शुरू से सुन रहा हूँ भी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मयूर जी हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। थैंक यू। नाइस। मयूर जी हमारे ईस्टर्न रीजन के बहुत होनहार चेहरा उभर के आ रहे हैं। ग्रेट। अब
मैट क्रेडिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जस्ट 2 मिनट बता दूं। अगर हम से मेरा 1 करोड़ का प्रॉफिट है, करेक्ट, और 1 करोड़ का प्रॉफिट है और हमने मुझे मैट लग रहा है, नॉर्मल मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो मुझे नॉर्मल टैक्स कुछ नहीं लग रहा है, 15 लाख रुपया मुझे मैट लग रहा है, तो आई हैव द ऑप्शन कि ये जो मैट का 15 लाख का टैक्स है इसको हम एसेट बोल के ले जाए और बैलेंस शीट में मैट क्रेडिट इंटाइटलमेंट बोल के कैरी फॉरवर्ड कर दे। देयर इज एन ऑप्शन, अगर हमको लगता है कि फ्यूचर में मेरा टैक्सेबल इनकम होगा और ये मैट क्रेडिट एडजस्ट हो जाएगा, तो देयर इज एन ऑप्शन। अब क्वेश्चन अराइज होता है, आप ये जब ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 15 लाख रुपया मैं कब कब रियलाइज करूंगा, ये मैं नेक्स्ट ईयर करूंगा, ईयर 1, 21, 22, 23, 24 का। तो अगर हमको लगता है कि 15 लाख में से अगला साल हम 5 लाख रिकवर कर लेंगे और अनदर 10 लाख मेरे को 2-3 साल लगेगा, तो सिर्फ 5 लाख करंट में आएगा, बाकी का 10 लाख नॉन करंट में आएगा। तो यहाँ पे ये सज्जन ने, ये कंपनी ने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने सारा का सारा करंट में दिखा दिया था, उन्होंने अप्रेज नहीं किया कि मेरा नेक्स्ट ईयर कितना रिकवर हो सकता है, मैट क्रेडिट एडजस्ट कितना होगा। तो टू दैट एक्सटेंट देयर इज अ कॉन्ट्रावेंशन, एंड जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आफ्टर 115 BAA हैज कम, आपके पास ऑप्शन है, अगर आप 115 BAA ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपको ये मैट नहीं लगता है। बट 2 चीज ध्यान रखना है, आपको 115 BAA में 80G का डिडक्शन नहीं मिलता है। तो हम जब 115 BAA ऑप्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट ईयर मार्च 20 था, 21 मार्च 21 सेकेंड ईयर है, तो जनरली BAA ऑप्ट करने के लिए आप अपना नेक्स्ट फ्यू ईयर्स का एक प्रोजेक्शन बना के टैक्स कंप्यूटेशन ऑल्टरनेट सिनेरियो में कंपेयर कर लें, कंपेयर करने के बाद देखें किसमें आपको बचत है, तभी आप BAA करें, क्योंकि BAA में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, BAA में आप ये 80G का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। 80G सिर्फ आपको मार्च 20 में मिल रहा था डिडक्शन, मार्च 21 में 80G का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नॉर्मल कंप्यूटेशन में आपको 80M का बेनिफिट मिल जाएगा, आपको डिविडेंड मिला, आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो आपको नॉर्मल कंप्यूटेशन में मिल जाएगा, बट मैट में नहीं मिलेगा। तो जब भी हम करें नेक्स्ट फ्यू इयर्स का हम कंपेरेटिव PL बैलेंस शीट बना के ही इसको आगे BA को एक्सरसाइज करें। सो ये मैट है। नेक्स्ट वी कम्स टू दिस पॉइंट, जो मैंने कहा कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में हम कैपिटल एडवांस नहीं दिखा सकते हैं, हमको कैपिटल एडवांस इज अ सेपरेट लाइन आइटम, और मुझे एक सेपरेट लाइन आइटम में ही कैपिटल एडवांस को दिखाना पड़ेगा। तो दिस वाज द केस कि हमको लॉन्ग टर्म एडवांस में कैपिटल एडवांस दिखाना पड़ेगा, हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कैपिटल एडवांसेस को नहीं दिखा सकते। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिया है एंड देयर आर डिफॉल्ट एज एट बैलेंस शीट डेट। ध्यान रखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। I have taken some long-term borrowings. There were default even during the year and even as at balance sheet date. हमारा ऑडिट रिपोर्ट में क्लॉज है, whether the company has defaulted in repayment of dues to banks, financial institutions or debenture holders. तो banks तो ठीक है, financial institution में NBFC is also a financial institution as per section 2 clause 39 of the Companies Act plus debenture holders. तो अगर मेरा डिफॉल्ट है इवन ड्यूरिंग द ईयर, कि मेरा ड्यू डेट था से 7 मई किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने का और हमने 15 मई को पेमेंट किया, सो देयर इज अ डिफॉल्ट, इवन अ डिले इज अ डिफॉल्ट। तो हमको बैलेंस शीट में, कारों का रिपोर्ट में ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, बट व्हेन इट कम्स टू बैलेंस शीट हमको सिर्फ रिपोर्टिंग देना है ओनली डिफॉल्ट विच आर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च। तो कल को ऐसा हुआ कि हमने कुछ डिफॉल्ट किया और बिफोर 31 मार्च सारा ठीक कर दिया, और 31 मार्च को मेरा कोई डिफॉल्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 31 मार्च को मेरा कोई डिफॉल्ट नहीं है, बैलेंस शीट में कुछ देने का जरूरत नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट में कारों में ऑडिटर देगा। तो बैलेंस शीट में हम क्या देंगे, जो 31 मार्च को डिफॉल्ट है। अगेन मेरे पास 5 बैंकर हैं, पांचों में डिफॉल्ट है, तो मेरे को डिफॉल्ट देना है बैंक वाइज, हम एग्रीगेट नहीं बोल सकते कि डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 5 करोड़। हमको बैंक वाइज, लेंडर वाइज इन एग्रीगेट ड्यूज दिखाना पड़ेगा। सो दिस इज द बेसिकली द कॉन्ट्रोवेंशन। और मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, I have 1 or 2 more case studies, right? So यहाँ पे था long term provisions was given and these includes provisions for bad debts. In receivables, no receivables were disclosed as doubtful. तो ऐसा समझिए कि हमारे पास सन्डी डेटर था 5 करोड़ रुपया का, हमने इसको दिखा दिया अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड, बट प्रोविजंस में हमने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाया। इसका मतलब हमने जो प्रोविजन बनाया दैट इज रिलेटिंग टू सम सन्डी डेटर्स, दिस मींस आउट ऑफ सन्डी डेटर्स ऑफ 5 करोड़ समथिंग इज डाउटफुल।
So showing everything as unsecured considered good is inappropriate. तो मुझे unsecured considered good, unsecured considered doubtful और provision. When it comes to a normal company, non-NBFC, हमको debtor के against में ही provision को less करना है. But when it comes to an NBFC, provision for bad and doubtful debts and provision for depreciation in value of investments, उसको हमको बैलेंस शीट में हम इन्वेस्टमेंट का लोन से नेट नहीं कर सकते, उसको हमको सेपरेटली लायबिलिटी साइड में शॉर्ट टर्म प्रोविजन या लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दिखाना पड़ेगा. तो वी कम टू द लास्ट केस स्टडी, शेयर कैपिटल. ये बहुत कॉमन है, लोग शेयर कैपिटल में पूरा डिस्क्लोजर नहीं देते हैं. मेरे को क्या क्या डिस्क्लोजर देना है? 5% देना है. और 5% किसका? अगर इक्विटी में मेरे 2 क्लास ऑफ शेयर होल्डर है तो दोनों का अलग अलग देना है. क्लास ए का 5% से ज्यादा, क्लास बी का. अगर प्रेफरेंस मेरे पास 5 क्लास का है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, पांचों का अलग देना है. प्लस राइट्स, प्रेफरेंसेस एंड रिस्ट्रिक्शंस अटैचिंग टू ईच क्लास ऑफ शेयर्स. तो सब क्लास ऑफ शेयर का क्या राइट है? राइट मतलब राइट टू वोट, राइट टू डिविडेंड, राइट टू कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर्स. प्रेफरेंस एज वेल एज इक्विटी मेरे को देना है. प्लस कोई रिस्ट्रिक्शंस है मेरे को कि ये और कोई मेरा रिस्ट्रिक्शन है इन रिलेशन टू दी शेयर्स, हमको सारा का सारा रिस्ट्रिक्शंस भी देना है. प्लस इसके सिवा का ये अलग डिटेल है कि आपने बोनस शेयर क्या दिया, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या इशू किया, वो सब बाईबैक क्या किया लास्ट 5 साल में, दोज आर सेपरेट डिटेल. बट अधिकतर कंपनी, इफ देयर आर डिफरेंट क्लासेस, वो राइट टू वोट, each member is entitled to either 1 vote per share or each member holding 10 share is entitled to 1 vote. Preference share का क्या right है? Very important is अगर 2 साल preference dividend नहीं पे करता है तो preference dividend also gets right to vote at general meeting of equity shareholders. तो अगर मान लीजिए 1 करोड़ का संदीप जी के पास इक्विटी शेयर है, 1 करोड़ का मयूर के पास प्रेफरेंस शेयर है, संदीप जी ने 2 साल प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया, तो मयूर ऑल्सो गेट्स वोटिंग राइट इक्वलेंट टू दैट ऑफ संदीप जी, क्योंकि उसके पास भी 1 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर है. तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर व्हेन डिविडेंड आर इन एरियर फॉर मोर देन 2 years गेट्स राइट इक्वलेंट टू दैट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर. तो आज के दिन अगर देखें तो जो संदीप जी की 100% वोटिंग राइट थी, अब वो 50% डाइल्यूट हो गई है. तो व्हेन इट कम्स टू सम डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, ये सारे डिस्क्लोजर्स भी अप्रोप्रिएटली होने चाहिए. तो मैंने थोड़ा 10 मिनट टाइम ज्यादा ले लिया है मेरे शेड्यूल टाइम से. सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर पेशेंट हियरिंग. अगर कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं. मोहित जी, आपने 10 मिनट थोड़ा कम ही लिया है. आई थिंक हमने स्टार्टिंग में 10 मिनट ज्यादा ले लिया था. अच्छा. ग्रेट कवर्ड. एनी क्वेरी, एनी क्वेरी. एक सर क्वेरी आया है रामोतार जी जोशी जी से. हाँ. तो सर जोशी जी, आप यदि लाइव हैं तो आप डायरेक्ट पूछे तो अच्छा लगेगा. सर इसमें जो आपने क्रॉस रेफरेंस की बात बताई थी, आरपीटी के टेबल में, राइट आरपीटी के टेबल में तो अपने को बहुत सी चीजें देते हैं, जैसे इनकम भी देते हैं. राइट. तो जो डायरेक्ट हो, करेक्ट, मैं समझ गया. तो जैसे मेरा सेल, परचेज, रेंट, बहुत कुछ हो सकता है, उसका जरूरत नहीं है. बट आप देखिए, जब हम लॉन्ग टर्म बोरिंग या शॉर्ट टर्म बोरिंग दिखाते हैं तो वहां लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज रहता है. तो जहाँ पे डायरेक्ट प्रेजेंटेशन है उसको हम क्रॉस रेफरेंसिंग करेंगे. नहीं, वहां पर हमने एमएसएमई का केस आपको इसलिए बोला क्योंकि एमएसएमई का जब हम बनाते हैं ट्रेड पेबल, वहां हम ड्यू टू एमएसएमई लिखते हैं, तो वो एक फिगर आता है, राइट. और हम एक एमएसएमई का टेबल भी बनाते हैं, वहां पे भी आपको एमएसएमई का आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, ओवरड्यू सब आता है. तो इसका क्रॉस रेफरेंसिंग जरूरत है ओनली क्लोजिंग बैलेंसेस के लिए. ठीक है सर. रामोतार जी, आपको एक और काम सुपुर्द कर रहे हैं. ये हमारे मोहित जी को वोट ऑफ थैंक्स प्लीज ऑफर करें. और हाँ सर, ओवर टू यू. थैंक यू मोहित जी. मोहित जी से जब भी अपने बात करते हैं वो सदैव अपने अब सीकेसी के साथ इनका ऐसा संबंध है कि जब भी बोलेंगे सब तैयार मिलेंगे. और इनके जो प्रेजेंटेशन है इट इज नॉट ओनली थ्योरेटिकल, वो प्रैक्टिकल होती हैं. जिसका भी जो अपने ऑडियंस है उनके दिमाग में बैठा देते हैं आपको ये काम करना है. जब भी वो काम करेगा उनका जो डेलिब्रेशन उसको एकदम ध्यान में आ जाएगा कि मेरे को यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ मेरे को ये सुधार करना है, ये करना है. तो अपने के एक जो
प्रैक्टिकल जो काम करते हैं, जब ये बैलेंस शीट बनाते हैं, जब ये ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, तो मोहित जी की बात सदैव ध्यान में आ जाती है। थैंक यू मोहित जी। ये एक छोटा सा बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। छोटा सा e-memento for your e-library. Thank you. And we will mail it to you also for your e-library. Please. Thank you for the time, sir. Thank you for from your busy schedule you have given 1 hour to us. Thanks a lot, sir. Thank you. Thanks a lot. And now we will move to our next speaker, Mayur ji. So Mayur Agarwal ji, as we all know, he is also contesting for our next election going to held in December. So he will take the important compliances that is required in the Companies Act 2013. So over to Mayur sir. Thank you, Sandeep ji. Good evening to all the participants. On the onset, I would like to thank the Central Kolkata CA Study Circle for giving me this opportunity to discuss important compliances under Companies Act. Friends, all the compliances are important. The first thing is all the compliances are important. We cannot segregate between if there is a small penalty, that compliance is not important, and if there is a large penalty, that compliance is more important. Not even in Companies Act, all the acts, all the statutory compliance are important. But from the eyes of the SSE, from the eyes of the stakeholders, practically what happens कि सर जहाँ पे ज्यादा दर्द होगा वो कंप्लायंस में ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने दे देते हैं, और जहां लगता है कि नहीं रेगुलेटर उतना प्रोएक्टिव नहीं है, एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेगुलेटर, इफ दे आर नॉट looking at the integrities of the compliances, we most of the time the stakeholders tend to skip those compliances or don't do it in the true spirit, और एक काम चलाओ तरीके से निकल जाते हैं. तो सर कंपनीज एक्ट के साथ भी यही हुआ सालों तक कि सर जस्ट शेयर द स्लाइड. बहुत सालों तक सर कंपनीज एक्ट के साथ भी यही होते आया कि फ्रॉम द रेगुलेटर्स पर्सपेक्टिव दे वर नॉट prior to, if you talk prior to Companies Act 2013, they were not that proactive as compared to current scenario when they are super proactive if you talk about non-compliances. तो जैसे जैसे Companies Act 8 साल हो गया, Companies Act 2013 को 7 साल बाद से, तो जैसे जैसे Companies Act 2013 शेप लेते गए, अमेंडमेंट्स आते गए इसमें, उसके दुगने रफ्तार से सर रेगुलेटर्स बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हो गए. अगर हम कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 में एक सबसे बड़ा चेंज अगर बोलेंगे सर, मोर देन 40-50 सेक्शंस ऐसे हैं 1956 में भी एंड 2013 में भी, जो कि बहुत, अगर हम फाइनेंशियल्स उठा के देखें या फिर हम चेक करने लग जाए तो बहुत कंपनियों में नॉन कंप्लायंस मिलेंगे. तो सर ऐसा क्या चेंज हो गया कि अब हम थोड़े प्रॉपरली देखते हैं और अवॉइड करना चाहते हैं उन नॉन कंप्लायंसेस को. तो ये सबसे बड़ा चेंज आया है, रेगुलेटर्स बहुत प्रोएक्टिव हो गए. जो सेक्शंस सिर्फ बुकिश सेक्शंस हुए करते थे, जो पेनल्टीज फाइन्स के सेक्शंस बुकिश सेक्शन हुए करते थे, कभी भी लेवी नहीं किए जाते थे, अभी सर रेगुलेटर सारे के सारे सेक्शंस को लेवी कर रहे हैं. इसीलिए सर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लायंसेस अंडर कंपनीज एक्ट, वी हैव टू बी वेरी we have to be like properly compliant, because छोटे से छोटे इश्यूज में आज के दिन रेगुलेटर में भी हमारे बंगाल में भी स्किप हो रहा है, बहुत सारे फाइन्स या पेनल्टीज नहीं लग रहे हैं, बट अदरवाइज बहुत जगह बहुत सारे आरओसी सर जो लिटरली नॉन मेंशनिंग ऑफ डिन एक बहुत छोटी बात है और बहुत छोटा सा नॉन कंप्लायंस है इफ से, बट the regulators are there is a prescribed penalty of 50,000 rupees if DIN number is not mentioned in any of the document where director is signing as per Companies Act. तो सर ये सब लेटर में ही हुआ करता था, बट नाउ स्पिरिट में भी एग्जीक्यूट हो रहा है एंड फाइलिंग्स चेक किए जा रहे हैं जहाँ पे लेटर हेड प्रॉपर नहीं है फॉर एग्जांपल, या और ऐसे छोटे छोटे नॉन कंप्लायंस में भी सर पेनल्टीज लग रहे हैं. और जैसा कि हमें पता है सर कंपनीज एक्ट 2013 का एक और सबसे बड़ी बात क्या थी कि सर देयर वर ह्यूज पेनल्टीज इफ यू कंपेयर इट विद
कंपनीज एक्ट 1956. तो मोस्टली सर डीक्रिमिनलाइजेशन की जो बात करते हैं, अगर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार बजट में बोला था कि कंपनीज एक्ट को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, एंड LLP एक्ट को दे विल बी डीक्रिमिनलाइजिंग गोइंग फॉरवर्ड. तो सर Companies Act decriminalization has been more or less completed. Companies Amendment Act 2017 and 19 and Companies Amendment Act 2020 दोनों को consolidate करके they have decriminalized Companies Act per se, and they are moving toward decriminalization of LLP as well. Already draft LLP amendment bill has been was introduced in Rajya Sabha. So very soon, once it is approved, so LLP decriminalization will also be done. If you talk about penalties and fine, most of the sections in Companies Act, they have removed fines and they have replaced it with penalties, and they have also reduced penalties substantially in many sections, except few sections of fraud, deposits, which are very, very important. They have not reduced, rather they have increased fines. Otherwise, they have decriminalized it and they have reduced fine. But the problem over here, what is left is additional fee. They have reduced fines and penalties, but if you talk about additional fee, till now there is, if you talk about annual compliances, there is a additional fee of 100 rupees per day, which is recurring, and there is no cap provided under the act. Till now, under Companies Act, there is no cap provided. For the first time in the LLP Act, in the draft LLP bill, which has been introduced in Rajya Sabha, they are providing for a maximum cap in case of certain LLPs, which will be prescribed through rules. So that cap is very, very necessary, and that must that is also a requirement which must from the when they are coming it with for the LLPs, they are coming up with this cap on an additional fee. So we expect that for at least for small companies or similar companies, in Companies that also such amendments may come. So we will not discuss in detail the compliances or any provisions. If at all any queries is there, the participant can raise the question and we can discuss on the queries. We'll one by one see what are the regular compliances and important one under the Companies Act, and we will discuss the overview of that and move forward from one compliances to another. These are the basic compliances. One second, Mayush. इसको थोड़ा यदि we can increase the size. Sure. These are the compliances. See, DPT3 is one of the form earlier before 2019. In January 2019, deposits rules were amended, and DPT3 was made a form. It used to be a form of return of deposit, but thereafter, even in case of exempted deposit, it was made mandatory that the companies holding exempted deposits also need to file DPT3 thereafter. So mostly in most of the companies holds exempted deposit. We'll see in detail what are exempted deposits. So it has become a part of our annual filing, more or less every year. Most of the companies required to file DPT3. The due date of DPT3 is 30th June every year. For the current financial year, also due date was 30th June, but then due to the lockdowns and COVID pandemic, the date has been extended till 31st August if the form is being filed. All the forms, the MC has prescribed a list of forms, and all the forms falling in that list, if it is being filed till 31st August, and the due date of the form is from falling from 1st of April 2021, then additional fee will not be levied. So we can file for financial year 2021, we can file till 31st August. Similarly, there is a in the same year, in January 2019, Ben 2 was introduced, Section 90 of the Companies Act, which talks about significant beneficial ownership. So now one-time filing of Ben 2 is more or less completed. Most of the companies would have filed it already. The extended date was extended till December 2020, and most of the company would have filed it. But then why we are talking about this? So this is also a very important form. Why? Because
anytime if there is any change in the shareholding pattern of the company, there is the company issues a share, company goes for a right issue, companies go, there is a transfer of share in the company, a bonus share is issued, or anything that sort of happens in the company, any restructuring happens, thereby if there is a change, there is a merger, demerger, or anything like that, and there is a change in the shareholding pattern of the company. So every time we need to test whether Ben2 applicability is coming or not, and even if it was applicable from it was already applicable, then whether the beneficial owner, the holding of the beneficial owner is changing. If at all it is changing, then we need to file Form Ben2 with the ROC, with the registrar of company. If a new beneficial interest is arrived, then or there is a change in the beneficial interest, then that person need to send to inform and intimate to the company within 30 days in Ben1, and the company need to file it in Ben2. So this is also important. Form MSME1, friends. MSME1 is a half-yearly form. It has become a half-yearly form. Every company, if there are dues of more than 45 days to a MSME, they need to file it within 30 days of the end of the half year. So it is the due dates are 30th April and 31st October, and half yearly we need to file this form. Again, for half year, for the year ended 31st March 2021, we can file it till August. DIR3 KYC, it is annual form again. Annually, we need to do a KYC of the directors. If we have already filed the form, we need to file it in a online eKYC, basically EDI, online DIR3 KYC we need to file. The due date, there is many a time there is a confusion regarding the original due date of DIR3 KYC, friends. The due date of DIR3 KYC is 30th September. It used to be 30th April earlier, then it was amended and the date was carried forward to 30th June. But now, as per Companies Act, the due date of DIR3 KYC is 30th September. And thereafter, there is a form PAS6, friends. It is a share capital audit report. Again, it is a half-yearly form which need to be filed by all the unlisted public companies. In case of unlisted public companies, dematerialization was mandatory. All the unlisted public companies need to facilitate dematerialization, and every half-yearly return they have to file in PAS6. We'll also discuss, friends, briefly discuss CSR provisions, which has been amended and recently in Feb and March 2021. The CSR provisions, there is a lot of changes in CSR provisions. We'll also discuss that in a bit, and then we'll also be discussing the annual filing. So these forms we'll see one by one a bit in detail, and simultaneously any query, any questions participants can raise. To discuss DPT3, we need to understand what is deposit, what is exempted deposit. DPT3 is applicable to, is required to be filed by all companies which is holding either deposit or exempted deposit as on the end of any financial year within 30th June. So moving forward, deposit has been defined under two sections, section 2, subsection 31 of the Companies Act, and in deposit rules also. What is the definition over there? Deposit includes any receipt of money by way of deposit or loan or in any other form by a company, but it does not include few things. So if we see to Rule 21C of the deposit rules, is prescribed for 19 exemptions. It is prescribed for 19 items which is excluded from the definition of deposits. So other than that, any amount which is received by the company by the way of deposit, loan, or any other form, that will become deposit. And if it is falling under these 18-19 items, it will become exempted deposit. I'll very quickly move ahead with what are the items, and we'll discuss a bit on the common items which day to day in case of SMEs and private company, which comes into picture in day-to-day dealings of the companies. Any receipts from the governments is exempted deposit. Foreign receipts are exempted deposits. Loans received from banks, cooperative banks,
SBI and any other banking companies, if the company is receiving, it will form part of the exempted deposits. Now, loans from public financial institutions, insurance companies, scheduled banks as exempted deposits. Any amount received by a company by issue of commercial paper forms part of the exempted deposits. And receipt from companies, any amount received by a company from any other company, that will also form part of the exempted deposit. So sir, if directly, if it is falling under any other specific clause, we need to refer that clause. If not, then if a company is receiving funds from any other company, it will be an exempted deposit, and it will form part of the exempted deposit DPT3, which we will be filing annually. And then any amount received by the company by subscription of securities, if the company is issuing some shares or securities, then it will be exempted deposits. Regarding directors and shareholder, we'll discuss later on, because it is a very common, commonly asked question, a query, whether if the money is received from a director, if it is received from a director's relative, if it is received from a shareholder, whether it will be exempted or not. So we'll discuss it separately. Now, if the company is issuing bonds or debentures, compulsory convertible debentures, then the receipt of money from that, the proceedings of that issue will also be an exempted deposit. In case of debentures, it must be a compulsory convertible debentures within 10 years. Then only it will form part of an exempted deposit. Otherwise, it will be a deposit phrase. Then, in case of non-convertible debentures, if there is a charge on the assets of the company and that debentures are listed, if that debentures are listed, then it will form part of an exempted deposit. So if the debenture are not listed, company cannot issue a non-convertible debentures. Then company can sometimes also receive loans from employees of the company. That will also be a part of the exempted deposit, but the amount must not exceed the annual salary of the employees. तो सर प्लानिंग में दिखा देते कि सर एम्प्लॉइज से जितना उसके फाइल में पैसा है वो कंपनी ने रिसीव कर लिया है, बट देन अगर ऐसा होता है 12 महीने से ज्यादा की उनके एनुअल सैलरी से ज्यादा अगर कंपनी लेती है एम्प्लॉइज से, तो वो सर एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट नहीं होगा, वो डिपॉजिट का पार्ट बन जाएगा. देन एनी नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अमाउंट रिसीव्ड और हेल्ड इन ट्रस्ट, दैट विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ अ एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट. फ्रेंड्स, वी मस्ट नॉट कंफ्यूज ओवर हियर दैट दिस इज नॉट एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ ट्रस्ट. सो सर ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट से अमाउंट अगर कंपनी रिसीव कर रही है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. दैट इज नॉट एन एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ अ डिपॉजिट. नाउ इन द कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो सर अगर कंपनी एडवांस लेती है, एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट द सेम विद इन अ पीरियड ऑफ 365 डेज, तो सर वो एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट होता है. तो सर यहाँ एक क्वेश्चन आता है, सर बियॉन्ड 365 डेज अगर हो जाता है तो क्या होगा, क्या कंप्लाइंस होगा. तो सर यहाँ पे एक we need to see properly, a word has been mentioned, appropriated over here. तो सर appropriate अगर मान लीजिए सर कंपनी ने रिसीव किया है 2 साल पहले का, but that has been appropriated means it has been defined that this advance is allocated towards a particular services or towards a particular goods, then even beyond 365 days that amount will continue to be an exempted deposit. तो सर ऐसा नहीं है कि सर अपने देखेंगे कि आज पैसा आया 365 दिन हो गया तो ये डिपॉजिट बन जाएगा. नो सर, सर विद इन 365 डेज द रूल्स इज सेइंग इट मस्ट बी अप्रोप्रिएटेड. ऐसा नहीं है कि 365 दिन के बाद वो आपको रिफंड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं. इफ इट इज नॉट अप्रोप्रिएटेड देन डेफिनेटली इट विल बिकम अ डिपॉजिट. इफ इट इज अप्रोप्रिएटेड देन इट विल नॉट बिकम अ डिपॉजिट. नाउ एडवांस रिसीव्ड इन कनेक्शन विद और कंसिडरेशन फॉर एन इमोवल प्रॉपर्टी. सर अगर इमोवल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एडवांस रिसीव किया हुआ है देन इट इज एन एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट. इमोवल प्रॉपर्टी के केस में ये 365 डेज वाला एप्लीकेबल नहीं होता है, ये स्पेसिफिक क्योंकि वहां पे मेंशन नहीं किया हुआ. अदर देन नॉर्मल ट्रेड एडवांस जो मिलता है उस केस में इन दैट केस 365 डेज लिमिट अप्लाइज. नाउ सिक्योरिटी डिपॉजिट विल फॉर्म पार्ट ऑफ अ एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट. एडवांस रिसीव्ड अंडर long term projects of supply of capital goods में सर there are long term project 5 years 7 year के projects होते हैं. तो उस केस में अगर सर long term project capital goods supply का long term contract के अंडर अगर कंपनी एडवांस रिसीव करती है तो that will be an exempted deposit.
an advance received and allowed by sectorial regulator. कोई sectorial regulator, if a company is being governed by a particular regulator and that regulator allows a particular advances, then that will be an exempted deposit. Now many time क्या होता है सर, बैंक बोलते हैं कि सर ये लोन आप लेंगे, पहले आपको ये इतना पैसा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कंपनी में, या सच एंड सच अमाउंट आपको लेके आना पड़ेगा. तो सर एनी अमाउंट ब्रॉट इन बाय प्रमोटर्स एंड देयर रिलेटिव by the way of unsecured loan in pursuance or of the stipulation of any lending financial institution or banks. So bank या financial institution के कहने पे अगर कुछ fund brought in कर रहे हैं promoters या their relatives, then that will form part of an exempted deposits. निधि कंपनी से अगर कोई पैसा आ रहा है कंपनी में सर, it will form part of an exempted deposits. Any amount received by subscription of chit funds, in respect of subscription of chit funds, will be an exempted deposits. Any amount received by the company under any collective investment scheme will be exempted deposits. So startup के लिए exemption दिया गया है. Any amount of 25 lakh rupees or more received by a startup company by way of convertible loan. If a startup company is receiving up to 25 lakhs by way of convertible loan, so that will become that amount will be considered as an exempted deposit. That will not form part of a deposit. And the last one is if the company is receiving any funds from a AIF, alternate investment fund, or domestic venture capital fund, real estate investment trustees, or mutual funds, so that will be also form part of exempted deposits. So these any amount falling under these 19 items funds will be exempted deposits. Other than that, that will not form part of an exempted deposit. We have skipped discussion of directors and directors relative. We'll discuss it over here. तो सर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कंपनी डायरेक्टर से पैसा रिसीव कर रही है, क्या वो डिपॉजिट होगा या एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट होगा? एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? सर डायरेक्टर कंपनी को पैसा दे सकता है क्या? क्या वो डिपॉजिट होगा या एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट होगा? यू कैन इवन राइट इन द चैट बॉक्स. संदीप जी? नहीं, इसमें आई थिंक प्राइवेट केसेस में, प्राइवेट कंपनीज के केसेस में डायरेक्टर्स दे सकते हैं, उसमें एक आई थिंक छूट दिया हुआ है, और बाकी काफी लिमिटेशंस है. और व्हाट अबाउट डायरेक्टर्स रिलेटिव? डायरेक्टिव रिलेटिव्स में भी अपने प्राइवेट कंपनीज में दिए हुए हैं. सर वन बाय वन डिस्कस करते हैं सर. सर डायरेक्टर्स में, डायरेक्टर्स रिलेटिव में सर रूल्स में ही प्रोवाइडेड है. rules and rules is applicable to all companies. So if the company is receiving funds from directors, so sir it is an exempted deposit. If the company is receiving funds from director, it is an exempted deposit. There is a 3 conditions attached to that. Number 1, definitely at the time of receipt, the amount receipt of the amount, the lender must be the director of the company. जब पैसे receive कर रही है company, at that particular time he must be the director. Second, the company need to take a declaration that the loan, the amount which the director is giving is from his own funds. Means sir, वो director cannot give loan to the company by borrowing. So own funds जो है वो दे सकती है. And the third one, the company shall disclose the details of money so accepted in the board report. So ये 2015 में ये amendment आया था board report वाला point. तो in case board report में अपने नहीं disclose करते हैं, तो सर ये complied नहीं होगा, and ये amount this will form part of the deposit बन जाएगा ये. तो सर डिक्लेरेशन लेना होगा, ओन फंड लेना है, बियॉन्ड ओन फंड अपने लेने जाएंगे तो वो भी सर डिपॉजिट बन जाएगा. एंड अपने को बोर्ड रिपोर्ट में ये डिस्क्लोजर भी देना है कि सच एंड सच अमाउंट हैज बीन टेकन फ्रॉम डायरेक्टर. वेदर ओनली डिक्लेरेशन इज सफिशिएंट फ्रॉम द डायरेक्टर फ्रॉम व्हिच द कंपनी इज टेकिंग, और वी हैव टू चेक बियॉन्ड द डिक्लेरेशन आल्सो. वी इन व्हिच कैपेसिटी? द कैपेसिटी ऑफ द ऑडिटर, yeah, or in the capacity of the management? So in the capacity of the in the capacity of the auditor, a declaration is sufficient. That talks about declaration. But in the when we talk about the capacity, in the capacity of the management, because the burden of compliance is on them, they must also actually check whether it is own funds or not. Because sir, non-compliance hoga, so it is there are 7 years of imprisonment prescribed under Companies Act for non-compliance of sections 73 to 76, sir. So sir, and it is a non-compoundable provision.
तो सर ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कभी भी। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को तो डिटेल चेक करके ही लेना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि डिक्लेरेशन बना के दे दी, ऑडिटर तो नहीं पकड़, ऑडिटर डिक्लेरेशन देखेगा एंड ही विल बी सेटिस्फाइड। सो इवन इफ आफ्टर लुकिंग एट द declaration, agar if the auditor is not satisfied, so he can go beyond also, but minimum check is declaration, क्योंकि अगर ऑडिटर को लगता है, हाँ yes भैया, and in the board report, whether it should be disclosed at the time of taking, in the year in which the amount is taken, or every year it has to every be year disclosed? sir, every year till the time this loan will be there in the book. This loan will be continuing every year. Two things will be disclosed. During the year, company has taken such and such amount from the directors, and as on 31st March, such and such amount is outstanding. Okay, fine. एक मिनट संदीप, मयूर जी, हाँ सर, advance from the director, that should also be, क्या सर? advance from the director. Kamal is asking for the हाँ समझ गया सर। सर वो एडवांस, कंपनी तो आप एडवांस में उसको कैटेगराइज कर रहे हैं या फिर लोन में कैटेगराइज कर रहे हैं? नहीं, एडवांस में कर रहे हैं। तब सर अगर वो एडवांस है एंड ट्रेड एडवांस है तो 365 डेज ही है। अपने बोल रहे हैं जब ये एडवांस है एंड इट इज नॉट अ लोन, बिकॉज उसमें उस केस में तो लोन एग्रीमेंट मिसिंग है, देन इट मस्ट बी अप्रोप्रिएटेड विद इन 365 डेज। बट सर छोटी, हाँ बोलिए सर। About 365 days it will be covered in it will become a deposit. But this advance should be against the purchase or sale of the goods now. हाँ, Otherwise just simple advance, as just require the money in the company's fund, and he has given, director has given. हाँ तो सर सिंपल एडवांस दे रहा है तो सर 365 दिन के अंदर रिवर्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये एडवांस किसी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए है जो कि अप्रोप्रिएट अपने कर सकते हैं, तो सर बियॉन्ड 365 डेज भी जा सकते हैं। बट सर अगर वी कैन नॉट सेटिस्फाइड, इट कैन नॉट बी अप्रोप्रिएटेड, देन विद इन 365 डेज रिफंड करना पड़ेगा। बट सर प्राइवेट कंपनियों में सजेस्टेड है कि अगर डायरेक्टर से पैसा आ रहा है एंड वो ओन फंड है तो बेटर टू ब्रिंग इट एज अ लोन। आप हाँ, आप इंटरेस्ट एंड ऑल अवॉइड करना चाह रहे होंगे इसलिए एडवांस दिखा रहे हैं, बट देन अगर ये थ्रू लोन लाते हैं तो ये रिफंड करने का चक्कर नहीं रहेगा विद इन 360। तो इंटरेस्ट फ्री लोन भी तो ले सकते हैं। हाँ, इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हैं। That should be indicated in the board report. Not necessary, but sir business prudence नहीं रहता है। Prima facie there is no non-compliance per se from Companies Act point of view, but then बहुत बार business prudence proof करने में दिक्कत हो जाता है कि डायरेक्टर ने छोटे मोटे अमाउंट है, then it is fine, but then if a hefty amount has been given by a director as an interest free loan to the company, तो उसका सर business prudence बहुत बार proof करने में दिक्कत हो जाती है। Otherwise ऐसा कोई non compliance नहीं है। Exempted deposit केस में अपने को DPT3 फाइल करना पड़ेगा क्या? Yes sir, yes sir. Even if company is exempted deposit लेके रखा है या डिपॉजिट नहीं भी है, छोटी कंपनियां नहीं लेती है, बट exempted डिपॉजिट है तो सर DPT3 जाएगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं सर। सेकेंड क्वेश्चन आता है रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स। सर रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स से भी ले सकते हैं सर। डायरेक्टर वाला प्रोविजन तो शुरू से था, फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 दीज प्रोविजंस वेयर देयर। रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर की अगर बात करें तो ये सर बाद में 2015 सितंबर 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया। सेम 3 कंडीशंस है रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर में भी। एट द टाइम ऑफ रिसीट दैट पर्सन मस्ट बी रिलेटिव, डिक्लेरेशन लेना होगा एंड बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट अबाउट रिसीट फ्रॉम अ शेयर होल्डर who is not a relative of the director? क्योंकि relative of director है शेयर होल्डर तो ऊपर वाले क्लॉज में ही कवर हो गया। If that person is not a relative of the director and if the company is taking loan from that, तो what will happen? सबसे पहले क्वेश्चन, क्या ये exempted deposit है या डिपॉजिट है? तो फ्रेंड्स, loan from shareholder is not a exempted deposit. It is a deposit. लोन फ्रॉम शेयर होल्डर डिपॉजिट है, ये एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट नहीं है। बट देन देयर आर 2 exemption notifications. Exemption notification dated 5th of June 2015 and thereafter 13 June 2017. सर इन दोनों exemption notification में compliances related to loan from shareholder has been exempted. So वहां बोला गया है जो सेक्शन 73 की compliances है, क्लॉज A to E सबसेक्शन 73 सबसेक्शन 2 के जो क्लॉज A to E है, इनका कंप्लाइंस एग्जेम्प्ट किया गया है।
ना कि ये लोन को एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट में डाला गया। तो दिस लोन इज अ डिपॉजिट, इट इज नॉट अ एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट लोन फ्रॉम शेयर होल्डर। अब आ जाते हैं सर कितना ले सकते हैं। तो सर 3 अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले तो 5 जून 2015 के नोटिफिकेशन में दे हैव प्रिस्क्राइब कि कंपनी कैन एक्सेप्ट अप टू 100% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम फ्रॉम शेयर होल्डर। तो सर इतना ले सकते हैं। सर इसके बियॉन्ड भी लिया जा सकता है क्या? सर देयर आफ्टर 13 जून 2017 वाले एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में दे हैव एडेड 2 मोर क्राइटेरिया। वन क्राइटेरिया इज कंपनी विच इज अ स्टार्टअप फॉर 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो स्टार्टअप के केस में 10 साल फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विदाउट एनी लिमिट शेयर होल्डर्स से कंपनी पैसा ले सकती है। कोई जो अदर देन स्टार्टअप के केस में जो 100% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम वाली लिमिट है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। देन सेकंड एक और क्लॉज ऐड हुआ है यहाँ पे भी, विदाउट इफ द कंपनी इज नॉट अ स्टार्टअप स्टिल कंपनी कैन टेक फंड्स फ्रॉम shareholders beyond 100%. They need to satisfy the 3 conditions mentioned over here. ये तीनों conditions अगर कंपनी satisfy करती है तो beyond 100% भी लोन ले सकती है। What are these 3 conditions? Number 1, a company which is not a associate or subsidiary of any other company. तो सर वो associate या subsidiary नहीं होनी चाहिए सबसे पहले किसी भी कंपनी की। Then borrowings of such company must not exceed 50 crore rupees. तो सर 50 करोड़ से नीचे का borrowings होना चाहिए। एंड थर्ड क्राइटेरिया इज कंपनी ने रिपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया वो होना चाहिए। तो इस केस में बियॉन्ड अपने अप टू 50 करोड़ सर अपने रिसीव कर सकते हैं, बियॉन्ड 100% भी जा सकते हैं फ्रॉम शेयर होल्डर। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज नॉट अ एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट। लोन फ्रॉम शेयर होल्डर इज अ डिपॉजिट। सर क्या फर्क पड़ता है लोन फ्रॉम एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट या डिपॉजिट? ले तो सकती है सर। जो DPT3 जब अपने फाइल करते हैं, जो आगे देखेंगे अपने, तो सर वहां पे डिपॉजिट के लिए अलग रेडियो टैब रहता है, रेडियो बटन रहता है, और एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट के लिए अलग रेडियो बटन रहता है। तो अगर लोन फ्रॉम शेयर होल्डर अपने ले रहे हैं तो रेडियो बटन 2 अपने को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सर आगे बढ़ते हैं क्विकली। सर ये जो वेरी इंपॉर्टेंट फाइन, एक सेकंड मयूर जी, लोन फ्रॉम शेयर होल्डर इज बेसिकली द नॉट द एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट। यस, लोन फ्रॉम शेयर होल्डर इज नॉट ये कुछ 3 कंडीशंस है जिसमें वो एग्जेम्प्टेड हो सकते हैं। नहीं सर, एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट नहीं है, बट सर अपने डिपॉजिट क्यों अवॉइड करती है कंपनियां? क्योंकि सर ये जो सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 के जो कंप्लायंसेस है ना, ये पॉसिबल नहीं होता है। बहुत कॉस्ट टेकिंग है, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है, अपने को एक ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है, तो बहुत कॉस्टली अफेयर हो जाता है छोटी कंपनी के लिए, इसीलिए अपने अवॉइड करते हैं। तो सर अभी क्या किया है कि सर ये प्राइवेट कंपनीज के लिए ये कंप्लायंसेस ही एग्जेम्प्ट कर दिया है। अच्छा, अगर आप है तो ये डिपॉजिट, लेकिन ये कंप्लायंस हम एग्जेम्प्ट कर दिए। तो सर मतलब अपने वो डिपॉजिट्स में ही शो करना है। DPT3 में यदि वी आर टेकिंग द लोन फ्रॉम शेयर होल्डर, देन वी हैव टू शो इट एज अ डिपॉजिट। अपने compliances not required to meet for the private company. Correct. And for these 3 conditions, compliances are not required to meet. नहीं, ये 3 अलग अलग कंडीशन है सर। या तो आप 100% लेते हैं, अप टू 100% ऑफ शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, इस लिमिट तक अगर आप ले रहे हैं तो आपको और कुछ भी देखना नहीं है, मतलब और किसी कंडीशन को नहीं देखना। इट इज अ डिपॉजिट बट यू कैन टेक अप टू 100%। ठीक है, अगर आप स्टार्टअप है तो विदाउट एनी लिमिट आप ले सकते हैं, और आप 100% से मान लीजिए आपको बियॉन्ड 100% लेना है इफ, तो सर ये तीसरे वाले कंडीशन में आपको आके देखना पड़ेगा कि सर अगर 50 करोड़ से नीचे का बोरिंग से टोटल एंड कंपनी सब्सिडरी एंड एसोसिएट नहीं है किसी की, तो सर बियॉन्ड 100% भी ले सकती है। राइट, परफेक्ट, थैंक यू सर। ये नॉन कंपाउंडेबल प्रोविजंस हैं। मिनिमम 1 करोड़ का, लोअर ऑफ 1 करोड़ और ट्वाइस ऑफ डिपॉजिट, एंड विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 10 करोड़ डिपॉजिट रूल्स, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन देयर इज अ 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। सर ये जो है ये 73 और 76 का नॉन कंप्लायंस के लिए है। सर अगर DPT3 नहीं फाइल करते तो भी क्या 1 करोड़ का पेनल्टी लग जाएगा या 7 साल जेल हो जाएगा? नहीं सर, DPT3 नॉन फाइलिंग के लिए स्पेसिफिकली कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, पेनल्टी फाइन कोई प्रिस्क्राइब नहीं है। सो जो जनरल फाइन ऑफ द एक्ट है, जनरल क्लॉज है, वहां से अट्रैक्ट होगा, विच इज अप टू 5,000 लग सकता है, एंड कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट के केस में 500 पर डे।
सर अभी आ जाता है DPT 3 फॉर्म में, ये जो रेडियो बटन की अपनी बात कर रहे थे सर, लोन फ्रॉम शेयर होल्डर अगर ले रहे हैं तो रेडियो बटन 2 होगा सर, डिपॉजिट्स क्योंकि ये डिपॉजिट्स हैं, या और कोई डिपॉजिट अगर कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो रेडियो बटन 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। इन केस ऑफ एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट रेडियो बटन 3 आ जाएगा पिक्चर में। एंड इफ द कंपनी इज हैविंग बोथ डिपॉजिट एंड एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट दोनों लेके रखी है तो रेडियो बटन 4 कंपनी को सेलेक्ट करके फॉर्म फाइल कर देना है। सर क्या ऑडिटर सर्टिफिकेट लगेगा DPT 3 में? सर इफ द कंपनी हैज टेकन डिपॉजिट तो ऑडिटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। सिर्फ एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट के केस में ऑडिटर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, यानी कंपनी ने अगर शेयर होल्डर से लोन लिया है तो ऑडिटर सर्टिफिकेट लगेगा सर। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता था 30 जून तक तो ऑडिट ही नहीं हुई, हम DPT 3 कैसे फाइल कर दें? सर DPT 3 इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑडिटेड डेटा से फाइल करना है। इफ द कंपनी हैज टेकन एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट तो उस केस में मैनेजमेंट सर्टिफाइड डेटा से भी फाइल हो सकता है। एंड लेटर ऑन सर ऑडिट के टाइम ऑडिटर ने कुछ चेंज किया, उससे तो मिसमैच हो जाएगा सर। इफ देयर हैज बीन एनी चेंजेस रिकमेंड बाय द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट इज एक्सेप्टिंग दैट चेंजेस इज बीइंग डन, तो सर कोई इशू नहीं है, दैट कैन बी डॉक्यूमेंटेड एंड लेटर ऑन इफ अ नोटिस और एनी इंक्वायरी इज कमिंग वी कैन explain the same to the regulator. And sir ड्यू डेट हमने इसकी बात कर ली, 30 जून ड्यू डेट रहता है। सर आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 90 की बात करते हैं जो कि है SBO, जिसके लिए बेन 2 ट्रिगर होता है। तो सेक्शन 90 की बात करने के पहले एक बार मैं when we are talking about important compliances, I would like to draw your attention on section 89 of the Companies Act, which talks about which is also related to beneficial interest. If there is a beneficial owner, ठीक है सर, अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ओनर एंड बेनिफिशियल ओनर अलग अलग होता है किसी शेयर्स का, देन सेक्शन 89 ऑफ द कंपनीज एक्ट कम्स इनटू पिक्चर एंड 89 का कंप्लायंस करना पड़ता है। सर एक एग्जांपल कब ये हो सकता है? सर इफ वी कंसीडर द एग्जांपल इन केस ऑफ इफ द शेयर होल्डर्स आर अ पार्टनरशिप फर्म, इफ द शेयर होल्डर आर HUF, इफ द शेयर होल्डर इज अ ट्रस्ट इज अ शेयर होल्डर, AOP BOI इज अ शेयर होल्डर, तो सर ये सब खुद के नाम पे शेयर्स नहीं होल्ड करते हैं। ये जैसे HUF है वो कर्ता के नाम पे शेयर होल्ड करता है, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के नाम पे शेयर्स होल्ड करते हैं। तो इन दोस केसेस सर सेक्शन 89 कम्स इनटू ट्रिगर। बेनिफिशियल ओनर एंड रजिस्टर्ड ओनर कर्ता को एंड HUF को सर MGT 4 and 5 कंपनी को देना पड़ता है एंड कंपनी को सर MGT 6 फाइल करना पड़ता है। इन केस सर ये नहीं फाइल्ड है, आई विल रिकमेंड टू चेक and comply with these provisions, because what is happening as of now, if the company is going to the regulators and say they are, for example, they are shifting the registered office, going for merger, going for a conversion of private company into public company or public company into private company, any of this restructuring अगर बड़ा करती है तो ये सारे पुराने नॉन कंप्लायंस रेगुलेटर्स चेक करते हैं और उस टाइम में फिर हो सकता है कि आपका रिस्ट्रक्चरिंग रिजेक्ट भी हो जाए। तो बेटर check these compliances and go ahead with it, because why I am mentioning section 89 over here, because many time what happens, sir management बोलता है सर हमने तो बेन 2 फाइल कर दिया, हो गया कंप्लाइंट। सर बेन 2 एंड MGT 6 दो अलग अलग सेक्शन ट्रिगर करता है एंड दो अलग अलग जगह इनकी फाइलिंग रिक्वायरमेंट है। नाउ सर बेन 2 के लिए we will straight away go to SBO rules. will say SBO rules define करता है significant beneficial owners को। सर अगर directly indirectly if a person is holding 10% or directly or holds directly or together with indirect holding, because indirect holding होना जरूरी है। What is the intent of SBO rules is the regulator wants to find out who are the indirect holder, who are the indirect owner of the regulator of a company। तो सर अगर डायरेक्ट होल्डिंग है किसी केस में तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, इनडायरेक्ट होल्डिंग जहां पे है वहां पे सर बेन 2 पिक्चर में आएगा। तो सर इनडायरेक्ट होल्डिंग along with direct अगर लेके more than 10% होता है, then you are a significant beneficial owner. If it is a shareholder, whether it is a shareholding, whether it is a voting rights, or whether the person is entitled to receive 10% or more of dividend or any distribution by the company, then that person will become a significant beneficial owner. Now, so अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग पर्सन SBO बनते हैं एंड उनकी फाइलिंग की रिक्वायरमेंट आती है। तो सर सबसे पहले ले लेते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। सर आपके शेयर होल्डर अगर कंपनी है उस केस में कब SBO बनेंगे वो? सर इन केस ऑफ कंपनी वेयर द मेंबर ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP and the individual holds majority stake in that member,
तो सर आर लिमिटेड अपनी रिपोर्टिंग कंपनी है जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं कि एसबीओ लागू होगा कि नहीं होगा। आई वुड लाइक टू रिपीट ओवर हियर, सर एसबीओ तो ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, हम अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं। सर मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को, सर एसबीओ इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसके बहुत सारे ऐसा देखा जा रहा है कि सर ये स्किप हो जाता है। सर शेयर ट्रांसफर अपने शेयर ट्रांसफर डीड बना के रख देते हैं और वी स्किप टू चेक वेदर उस समय एसबीओ का अल्टरेशन हुआ है क्या कुछ, या फिर फ्रेश फाइलिंग की लाइबिलिटी आ रही है क्या। Whenever there is a change in shareholder, we must check SBO rules and अगर रिक्वायरमेंट है तो बेन टू फाइल करनी है सर अपने को। तो सर आर लिमिटेड के लिए हमें फाइल करना है, चेक करना है कि सर एसबीओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एंड उसका शेयर होल्डर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है। तो सर अब हमें क्या कैसे चेक करेंगे, तो सर सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कोई इंडिविजुअल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में मेजॉरिटी स्टेक होल्ड कर रहा है कि नहीं। व्हाट डू वी मीन बाय मेजॉरिटी स्टेक, सर 50% से ज्यादा होल्ड कर रहा है कि नहीं। अगर कोई इंडिविजुअल मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करता है इन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो दैट इंडिविजुअल विल बिकम सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ऑफ आर लिमिटेड या आर प्राइवेट लिमिटेड। सिमिलरली इन केस ऑफ सर चेन अगर होल्डिंग है, इन केस ऑफ, तो उस केस में सर अपने अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी का होल्डिंग देखेंगे कि सर अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी में कोई इंडिविजुअल मोर देन 50% होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इफ यस, देन दैट इंडिविजुअल विल बिकम significant beneficial owner of R limited funds. So what will happen in case of HUF? So in case of HUF, if HUF is a shareholder, then Karta will become a indirect holder of HUF, indirect holder of that R limited. And then if Karta ka, including direct holding, if it is more than 10%, then SBO rules will be applicable. Similarly, in case of partnership entities or in case of LLP, what will happen if the shareholder is a LLP or partnership entity? So all the partners will become a indirect holder, and then उनके direct holding मिला करके अगर 10% से ज्यादा होती है, then SBO rules will be applicable and the company need to file PEN 2 friends. So trust के केस में अगर charitable trust shareholder है तो trustee will become a indirect holder, specific trust के केस में beneficiary, and रिवोकेबल ट्रस्ट के केस में ऑदर और सेटलर विल बिकम इनडायरेक्ट होल्डर, एंड अगेन उनके डायरेक्ट होल्डिंग को ऐड करके विल सी, एंड इफ इट इज बियॉन्ड 10% देन एसबीओ रूल्स विल बी एप्लीकेबल एंड बेन टू फाइल करना है। विल स्किप द एग्जांपल्स एंड DIR 3 KYC वी हैव डिस्कस्ड, 30th September इज द ड्यू डेट। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो आपको DIR 3 KYC फॉर्म फाइल करना है। अगर आप ऑलरेडी पास्ट ईयर्स में DIR 3 KYC फाइल कर चुके हैं, देन you need to file web form of DIR 3 KYC, that is DIR 3 KYC web form, and so normally there is no fees to it. If we are filing it delayed, then 5,000 is the delay fee. सर अपने को कंपनी को अगर डायरेक्टर को मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज करना है तो सर DIR 6 के थ्रू तो वो होता नहीं है, कैसे करेंगे? सर इफ देयर इज अ चेंज इन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वी नीड टू फाइल DIR 3 KYC. The director need to file DIR 3 KYC. In any other changes, DIR 6 is the relevant form which is required to be filed. सर PAS 6 में आ जाते हैं। सर बहुत जन पूछते हैं सर ये डीमैट, सर प्राइवेट कंपनियों को भी डीमैट अब कराना है, बहुत एक कंफ्यूजन होता है कि सर सिर्फ पब्लिक कंपनियों के लिए कराना है। सर सेक्शन 29 इज द सेक्शन व्हिच इज गिविंग द पावर फॉर मैंडेटिंग द डीमैटेरियलाइजेशन, और सर सेक्शन 29 में कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 आई बिलीव, कंपनीज अमेंडमेंट 2017 में सर के पहले इसमें एक पब्लिक कंपनीज वर्ड हुआ करता था, तो दे हैव डिलीटेड पब्लिक कंपनीज। तो यहीं से ये कंफ्यूजन अराइज हुआ कि क्या सर प्राइवेट कंपनियों को भी डीमेट कराना है क्या? तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव ड्रॉन द ministry had drawn power by amending section 29. Now whenever they want, they can apply the provisions of mandatory dematting on प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो। सो सर वो प्राइवेट उन्होंने पावर ड्रॉ कर लिया है, और ये इंटेंट भी दिखाता है कि सूनर और लेटर डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स विल बी मेड एप्लीकेबल टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ऑल्सो। मे बी कुछ एग्जेम्पशंस दे दे उसमें, या स्मॉल कंपनीज को एग्जेम्प्ट कर दे या वैसा कुछ, बट ये एप्लीकेबल होगा सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए भी। आज के दिन लिस्टेड कंपनियों के लिए तो मैंडेटरी रहता ही है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियों के लिए भी डीमैटेरियलाइजेशन इज मैंडेटरी। सर कब से मैंडेटरी है? 2 October 2018 was the date। 2 October 2018 के बाद
से मैंडेटरी है। सर अगर हमने नहीं कराया क्या होगा? सर एक तो नॉन कंप्लाइंस है। सर कुछ फाइन या पेनल्टी प्रिस्क्राइब किया हुआ है क्या? नो फाइन या पेनल्टी हैज बीन प्रिस्क्राइब अंडर दीज रूल्स और सेक्शन 29। सो सर जनरल पेनल्टी ऑफ द एक्ट लगेगा which is 5,000 rupees, and if it is a continuous non-compliances then 500 rupees per day, जो कि एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि सर 2018 से ये एप्लीकेबल था एंड हमने अभी तक ये कंप्लाई नहीं किया है। केस कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद इट टिल नाउ, सो इट विल बी अ कंटिन्यूअस नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड 500 रुपीज पर डे का पेनल्टी लग सकता है। और सर अगर हमने डीमैट नहीं किया तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है कंपनियों पे? सर अगर कंपनी ने डीमैट नहीं किया तो कंपनी जब तक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी डीमैट नहीं करती है शेयर, तब तक सर दे कैन नॉट इशू फर्दर शेयर्स। फर्दर शेयर कंपनी नहीं इशू कर सकती है। there is a question I'll take after past 6 discussion. तो सर कंपनी फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स नहीं ला सकती है, कंपनी बायबैक नहीं कर सकती है, बोनस इशू नहीं कर सकती है, राइट इशू नहीं कर सकती है टिल कंपनी फैसिलिटेट डिमेटेरियलाइजेशन एंड सारे के सारे केएमपी का शेयर्स डिमेटेरियलाइज हो जाए। तो सर कैसे डिमेटेरियलाइज करेंगे? सर आईएसआईएन अपने को एनएचडीएल या सीडीएसएल के पास जाना है कंपनी को एंड डिमेटेरियलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले एक आईएसआईएन नंबर लेना है एंड देन वी नीड टू अपॉइंट एन आरटीए and we have to go for dematerialization. सर कोई फॉर्म भी फाइल करना है क्या डिमेटेरियलाइजेशन के लिए? यस फ्रेंड्स, शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट जो कि लिस्टेड कंपनी में क्वार्टरली करते हैं, इन केस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हाफ ईयरली फॉर्म पास 6 फाइल करना है विद इन 60 डेज ऑफ द एंड ऑफ द हाफ ईयर। तो सर अगर आईएसआईएन नंबर ही नहीं आया तो कैसे फाइल कर पाएंगे? सर नहीं फाइल कर पाएंगे, जब तक आईएसआईएन नंबर नहीं आएगा तब तक नहीं फाइल करेंगे। सर मेनी केस ये देखा गया है कि कंपनी डीमैट किए बिना शेयर ट्रांसफर वगैरह कर रही है, तो दैट इज अ शेयर नॉन कंप्लायंस। दिस इज जस्ट द समरी। सीएसआर में जाने के पहले मयूर जी, इसमें जो आपने लिखा ये पास 6 इज एनुअली इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड हाफ ईयरली सर। हाँ, मतलब हाफ ईयरली एवरी ईयर they have every half year. Unlisted public company, all the unlisted public company need to file it half yearly every year. There is a query from Dhriti ji. If husband and wife are holding jointly more than 50% in the company, then will it consider this indirect holding or provisions of SBO will apply? There is no separate contract for this. मैम अगर वो कंपनी में 50% एंड बियॉन्ड होल्ड कर रही है, धृति जी इफ यू कैन अनम्यूट बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट गिविंग एग्जैक्ट, क्योंकि अगर डायरेक्टली इफ दे आर होल्डिंग देयर इज नो इशू विद दैट, डायरेक्टली तो अगर होल्ड ही कर सकते हैं, बाकी 50% शेयर होल्डर्स कौन है इस पे डिपेंड करेगा। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। एक्चुअली द थिंग इज कि हस्बैंड भी शेयर होल्डर है, वाइफ भी शेयर होल्डर है, उन दोनों मिला के इनडायरेक्टली दे आर होल्डिंग मोर देन 50%। आप इंडिविजुअली जाओगे तो 25% है, और जैसे हम लोग जब जॉइंटली देखेंगे तो इट इज कमिंग टू 51% सपोज। तो उस केस में जैसे हमारा जो रिपोर्टिंग एंटिटी है आर लिमिटेड, जैसे आपने बोला, ठीक है, केस में वो एसबीओ अप्लाई होगा क्या? मतलब आर लिमिटेड, मैम आर लिमिटेड के कौन कौन से होल्डर है? 50% इज होल्ड बाय हस्बैंड एंड वाइफ, ओके, रिमेनिंग से होल्डर कौन है? नहीं, जैसे रिपोर्टिंग एंटिटी आपकी आर लिमिटेड हो गई, उसमें एबीसी लिमिटेड जो आपने कंपनी बोली उसमें शेयर होल्डर हस्बैंड एंड वाइफ जो मैं बात कर रही हूँ 26% एंड 25% होल्ड कर रहे हैं। ओके, गॉट योर क्वेरी मैम। आप पूछ रहे हैं आर लिमिटेड इज अ रिपोर्टिंग एंटिटी, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ शेयर होल्डर ऑफ आर लिमिटेड, ठीक है, व्हिच इज होल्डिंग बियॉन्ड 10% डेफिनेटली इन आवर केस। सो उस नाउ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर होल्डर को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे होल्ड्स मेजॉरिटी स्टेक इन द मेंबर की बात हो रहा है। तो मैम इफ वी रीड इट, व्हेन वी सी दिस मेजॉरिटी स्टेक इन द मेंबर, यहाँ पे इनडायरेक्ट होल्ड, इसमें टुगेदर विथ बोल ही नहीं रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअल की होल्डिंग की बात होती है। टुगेदर विथ हम 10% के लिए चेक करते हैं कि मैम इफ आई एम होल्डिंग 5% एंड आई हैव एन इनडायरेक्ट होल्डिंग ऑफ 6%, तो 5 + 6 इज 11, तो वहां पे होल्डिंग आता है। यहाँ फॉर मेजॉरिटी स्टेक विल नॉट सी होल्डिंग along with anyone, we need to see a individual holding। तो आपके केस में 25 and 26% है, तो it will not
become SBO, indirect holding ही नहीं होगा तो SBO का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। Thank you, sir. धर्मचंद जी ने हैंड रेज किया, सर बोलिए। सर काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। Dharamchandji, do you have any question? ठीक है, अपने आगे बढ़ते हैं। सर का कोई क्वेरी आएगा तो वी कैन टेक इट। सर CSR में वेरी क्विकली आई विल डिस्कस CSR। सर एप्लीकेबिलिटी क्या, व्हाई एप्लीकेबिलिटी इज एवरी कंपनी satisfying any of these three criteria: 500 crore net worth, turnover of 100 crores, 1000 crore, or net profit of 5 crores in during the immediately preceding financial year. Any of the criteria अगर ट्रिगर होता है CSR applicable हो जाता है। What is the amount of CSR? Last previous 3 years का 2% of net profit. Net profit is before tax. PBT हम देखेंगे। Profit we need to calculate as per section 190 of the act. जो सर मैनेजरियल रेम्युनरेशन के लिए हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, सेक्शन 190 के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स का 2% निकालेंगे। दैट विल बी द CSR लायबिलिटी। सर अभी क्या चेंज आ गया है? सर पहले कंप्लाई और एक्सप्लेन प्रोविजंस हुआ करता था CSR का। नाउ कंप्लाई और एक्सप्लेन and penalty also they have prescribed. Yani, so now they have mandated CSR in true sense. So before these amendments in Q4 of 2020, even if CSR was applicable to the company and they are not spending the applicable amount, say the liability of CSR of the company was 10 lakh rupees and company has not spent a single penny. So only if the company is disclosing the reason for not spending in the board report, that used to be a sufficient compliance under Companies Act, and the company was not required to spend those 10 lakh rupees. But now there is no such provisions. Agar the company need to mandatory spend these 10 lakh rupees. So sir, इसको समझते हैं अब क्या provision आ गया है. So say we have calculated 2% of average profit of last 3 years and the amount is coming to be 10 lakh rupees. Out of this 10 lakhs, we'll bifurcate into 3 parts. 3 lakhs company has spent, okay, fine. Remaining, out of remaining 7 lakhs, 5 lakhs rupees is related to my ongoing project, a project which is continuing, but we have budgeted for the during the year, but we have not been able to complete it. So these 5 lakh rupees, company need to open a separate unspent account, unspent amount of ongoing project, ongoing unspent CSR account will be opened with the bank, and these 5 lakhs need to be transferred to this unspent CSR account within 30 days from the end of the financial year and need to be utilized within next 3 years. Sir, 5 lakhs हम 3 लाख हमने खर्चा कर दिया, 5 लाख हमने अनस्पेंट CSR अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। रिमेनिंग 2 लाख जो कि हमने खर्चा भी नहीं किया और अनस्पेंट CSR अकाउंट से भी रिलेटेड नहीं है, सर उसका क्या होगा? That 2 lakhs need to be transferred to a specified funds specified in Schedule 7, PM Care and other funds specified in Schedule 7 within 6 महीने। तो सर या तो आप CSR में खर्चा कीजिए, नहीं तो पैसे गवर्नमेंट को देने पड़ जाएंगे। सर और क्या नया आया है CSR में? सर इन्होंने पहली बार ये डिफाइन किया कि क्या CSR नहीं है, व्हाट इज नॉट CSR। कोई भी एक्टिविटी जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कंपनी करती है, दैट इज नॉट CSR। अरे वाह हमारे प्रिंसिपल थे यार, ज्वाइन किया। देन एनी एक्टिविटी अंडरटेकन आउटसाइड इंडिया, सर वो कह रहे हैं CSR आप कंट्री में इंडिया में कीजिए, बाहर कर रहे हैं अदर देन ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सनल विल नॉट बी क्लासिफाइड एज CSR एक्सपेंडिचर। Any amount given directly, indirectly to political party, any activity benefiting employees of the company will not be a CSR. Say any activity by the company on a sponsorship basis deriving marketing benefit will not be CSR. Activities carried out for the fulfillment of any statutory liability will not be a CSR. Then CSR में CSR committee के लिए उन्होंने they have given an exemption for the first time. If the CSR liability is less than 50 lakhs, company is not required to create a CSR committee. The functions of the committee will be discharged by the board. ठीक है, we have discussed. This is also new. If the company is not doing the CSR activity directly and they are doing it through implementing agencies,
if the company is doing the CSR activities through implementing agencies, then that implementing agency is now required to be registered with the So all the implementing agencies is required to file form CSR1, and it must get it registered with the central government. Once the implementing agency is filing this form CSR1, the entity will get a CSR registration number, and then only any amount given to the entity will be considered as CSR expenditure. If the entity has not filed CSR1 and the company is giving some expenditure to or transferring some amount to them, then these amount will not be considered as CSR expenditure funds. Sandeep ji, how much time do I have? कब तक continue करें? I think 5 to 10 minutes will be okay. Okay. Thank you, Sandeep ji. I'll conclude in next 10 minutes. सर अब आ जाते हैं डायरेक्टली एनुअल फाइलिंग्स पे. क्रिटिकल एस्पेक्ट क्विकली अपने डिस्कस करते हैं नेक्स्ट 5-10 मिनट में, क्योंकि रेगुलरली हम एनुअल फाइलिंग कर रहे हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013 भी. वी आर डूइंग इट सिंस लास्ट 7 years. Section, these are the relevant sections related to annual filing, and these are the relevant forms: MGT 14, MGT 15, ADT 1, AOC 4, MGT 7 and DIR 12 friends. सर MGT 14 क्विकली डिस्कस करते हैं, क्योंकि सर बहुत सारी कंपनियों में अभी वी आर सीइंग दैट 2014 में MGT 14 वाज मैंडेटरी, बट मेनी अ कंपनी हैज नॉट फाइल्ड MGT 14 इन 2014. तो सर अभी बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि सर वो डिले कंडोन कराना पड़ रहा है, and MGT 14 cannot be filed beyond 300 days. So what is happening if the company has not filed in 2014 form MGT 14 related to approval of financial statement and MBP1 received by the company from the directors. So sir, उस केस में भी again one of the point which regulator is checking, सर आप शिफ्टिंग के लिए जाएंगे या मर्जर के लिए या किसी भी चीज के लिए जाएंगे, तो दैट विल गेट रिजेक्टेड इफ द कंपनी हैज नॉट फाइल्ड MGT 14 इन 2014. तो दैट नीड टू बी चेक्ड. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट नीड टू बी चेक्ड. सर MGT 14 में आ जाते हैं सेक्शन 117, सेक्शन 179 एंड रूल 85 ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल इज द रिलेवेंट सेक्शंस जो कि MGT 14 को ट्रिगर करता है. तो सर in 2014 all of these were applicable for private limited companies. 5 June 2015 के exemption notification में बहुत सारे clause को exempt कर दिया गया था for private companies, but सर limited कंपनियों के लिए अभी भी applicable है. तो सर SR के केस में तो सर all the companies, even private and public, need to file MGT 14, appointment, reappointment of MDs, voluntary liquidations. इन सब केसेस में अगर कंपनी SR पास करती है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या लिमिटेड कंपनी हो, MGT 14 इज मैंडेटरी एंड इट इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड. सर इसके बाद सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 कुछ क्राइटेरिया देते हैं या कुछ इवेंट्स देते हैं. उस केस में सर MGT 14 it is required to be filed. But section 179 subsection 3 was exempted for private limited company from 5th June 2015. तो उसके पहले सर 2014 में अगर अपने ये सब क्राइटेरिया हिट हुए हैं, ये सब में कहीं भी अगर ये सब इवेंट हुआ है, तो सर 2014 के लिए एप्लीकेबल था. और अभी भी अगर आपने नहीं फाइल किया है तो इट इज सजेस्टेड इमीडिएटली 2014 का MGT 14 डिले कंडोन करा के फाइल कर लेना चाहिए. सर डिले कंडोन कैसे कराएंगे? वी नीड टू फाइल CG1 विथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. And once approved, the company will receive an order. That order is required to be filed in form INC 28, and उसके बाद अपने MGT 14 फाइल कर पाएंगे, क्योंकि beyond 300 days without condoning delay MGT 14 फाइल नहीं होता है. तो सर ये सारे क्लॉज जिसमें कि one of the most important was to approve financial statement and board report. It is now not applicable all this clause to private companies, but limited companies, even unlisted public companies के लिए ये सारे क्लॉज applicable हैं, और जब भी ट्रिगर करेंगे MGT 14 फाइल होगा. सर ये बहुत सारे और भी क्राइटेरियाज हुए करते थे फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज, तो उनको डिलीट कर दिया गया, अमेंड कर दिया गया. नाउ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ KMP, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर, एंड इफ द कंपनी इज मेकिंग अ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, देन in case of limited companies MGT 14 is required to be filed. In case of private limited ये auditor, internal auditor या secretarial auditor appointment के केस में भी MGT 14 is not required per se.
Now, MGT 15 we are skipping. ADT, okay, these are normal compliances. So MGT 7 के लिए just I would like to say one thing. For recently they have introduced a new form MGT 7A. So sir, for the financial year 2021 onwards, say small company and 1% company MGT 7 नहीं file कर पाएगी. In case of small company and 1% company MGT 7A file करना है. सर क्या अंतर है दोनों में? सर क्योंकि स्मॉल कंपनियों पे केएमपी के बहुत सारे प्रोविजंस नहीं एप्लीकेबल होते हैं, लिस्ट ऑफ केएमपी एंड ऑल, तो सर उनको एमजीटी 7A में छोटा कर दिया कुछ फॉर्म को और ये सारे केएमपी से रिलेटेड क्लॉज को हटा दिया गया. एंड सर पिछले सालों का स्मॉल कंपनी को फाइल करना है, 2015-16 या 18-19 का हमने नहीं फाइल किया एमजीटी 7, आज के दिन फाइल करना है, तो सर हम एमजीटी 7, हम स्मॉल कंपनी है, डू वी रिक्वायर टू फाइल एमजीटी 7 और एमजीटी 7A? सर गोइंग फॉरवर्ड स्मॉल कंपनी कैन ओनली फाइल एमजीटी 7A. सर एमजीटी 7 में आप जाके फिल करने की कोशिश करेंगे, आपका प्रीफिल ही नहीं होगा सिन नंबर. सो हेंस फॉर small company and OPC can only file MGT 7A only. Sir, एक और लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन, MGT 9 सर, MGT 9 को लेके बहुत कंफ्यूजन रहा है, हर साल ही रहा है और बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी आए हैं MGT 9 को लेके. तो क्या सर 2021 के डायरेक्टर रिपोर्ट में MGT 9 अटैच करना है, वेदर इट इज एप्लीकेबल और नॉट? फ्रेंड्स, लेटली लास्टली 5 मार्च 2021 को अमेंडमेंट आए थे रूल्स में, एंड फाइनली MGT 9 हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम ऑल द प्लेसेस इन द एक्ट, एंड ऑल द कंफ्यूजन्स रिलेटेड टू MGT 9 हैज came to rest after 5th March 2021 amendments. So now section 134, section 92 and rule 12 sub rule 1 में तीनों जगह से हट गया है. So MGT 9 is not applicable. None of the companies required to attach MGT 9 to board report from 2021 financial year 2021. Annual return का web address अपने को डायरेक्टर रिपोर्ट में मेंशन करना अगर आपका वेबसाइट है. Other than that, MGT 9 is not required. That's it from my side. Thank you so much. Thank you all. सर हमारा एक क्वेश्चन था. हाँ बोलिए सर. मेरा यह था कि जैसे अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसका डीमेट नहीं है, तो हाँ, क्या शेयर होल्डर आपस में बेच सकते हैं शेयर को? सर शेयर ट्रांसफर कंपनी एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है जब तक डीमेट नहीं है. हाँ, ये पब्लिक कंपनी के केस. ये कंपनी ट्रांसफर नहीं कर सकेगी? नहीं कर सकते सर. इनफैक्ट अब तो पहले तो विदाउट पैस 6 फाइल अगर कंपनी पब्लिक लिमिटेड टू प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट हो रही थी. नाउ रेगुलेटर्स आर also not allowing conversion of public limited to private limited without filing of up to date PAS 6. थैंक यू सर. थैंक यू. मतलब शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफर ना, मतलब सर शेयर होल्डर तो कंपनी के पास भेजेगा ट्रांसफर करने के लिए, तो कंपनी ट्रांसफर एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है सर जब तक डीमेट नहीं हो सकता. एज पर रूल, एज पर लॉ नहीं कर सकती है. वो ट्रांसफर एग्जीक्यूट करके नाम कर दिया किसी की अलग बात है, बट एक्ट रेस्ट्रिक्ट करता है. And there is a penalty is 500 rupees per day. 5,000 plus 500 rupees per day. 5,000 है, एंड कंटिन्यूअस अगर आपका डिफॉल्ट रहता है तो 500 रुपीज पर डे. एंड क्योंकि सर पैस 6 तो हाफ ईयरली फाइल करना है कंपनी को, तो दिस ऑटोमेटिकली बिकम अ कंटिन्यूअल डिफॉल्ट. Yes. Okay. Any condemnation is there for this default? सर ये अभी सर ये एडिशनल फी नहीं है 500 रुपीज सर, पेनल्टी है. तो अगर आप फाइल कर देते हैं अभी डीमैट करा के, तो लेटर ऑन अगर कोई नोटिस आता है तो ये प्ली लिया जा सकता है. अदर मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब पैस 6 फाइल करेंगे तो उसमें 500 रुपीज पर डे लगेगा. उसमें मैक्सिमम 13 टाइम्स ऑफ 12 टाइम्स एडिशनल फी एंड 1 टाइम, बेसिकली 13 टाइम्स ऑफ द फीस लगेगा सर जब आप पैस 6 फाइल करते हैं. पास 6 अपने पुराने छोड़ के करंट का जमा करेंगे तो पुराने का डिफॉल्ट हो गया आपने. हाँ, तो सर बेसिकली सजेस्टेड यही है कि अगर आप डिमेटलाइजेशन करा लेते हैं अभी, तो सारा 5 या 5 आई थिंक पैस 6 ड्यू हो जाएगा, तो सारा ही फाइल कीजिए. मतलब डिमेटलाइज करके अभी अपने को पुराने ईयर्स का भी फाइल करना चाहिए. बिल्कुल. राजेश जी, आई थिंक आपका क्वेश्चन है कुछ. राजेश. मयूर जी, मेरा क्वेश्चन था. बोलिए भैया. Am I audible? Yes, sir.
अच्छा मयूर जी, जैसे कई बार क्या होता है कि कंपनियां अपना एक वेबसाइट बनाती है, वेबसाइट का क्या कोई डेफिनेशन है क्या एक्ट में? जैसे क्या होता है कि कई बार हम लोग खाली सेल के लिए, लाइक आई वांट टू सेल माय प्रोडक्ट्स, आई वांट टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट द कंपनी इज डीलिंग, हमने कोई फाइनेंशियल्स नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, उस केस में भी क्या मेरे को MGT 7 का लिंक देना होगा? देना होगा सर, MGT 9 अगर का कंपनी की वेबसाइट है तो देना होगा सर। वेबसाइट का कोई डेफिनेशन कहीं पे है कि भाई? नहीं सर, इट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर, दैट्स व्हाई। अगर डिफाइंड रहता तो मे बी एक कमर्शियल वेबसाइट को अपने स्किप कर पाते, बट देन इट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर, सो इट इज कंपल्सरी देन। हाँ हाँ, इट इज रिकमेंडेड कि सर आप बेसिकली व्हाट इज रिक्वायर्ड इज आप अपने ही वेबसाइट में एक फाइनेंशियल्स का एक टैब बनवा लीजिए, जिसमें आप एनुअल रिटर्न का एक टैब बना लीजिए। एंड क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होगा कि बोर्ड रिपोर्ट हम आज बना रहे हैं, MGT 7 तो हम AGM के 2 महीने बाद फाइल करेंगे, बिल्कुल, तो हम उस एनुअल रिटर्न का लिंक आज कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल, तो सर बेसिकली हम एक टैब बना लेंगे, जैसे एक फोल्डर का एड्रेस होता है ना, वैसे ही उस टैब का एड्रेस होगा, और उस टैब में जब जब फाइल हुआ हर साल MGT 7 डालते जाएंगे सर। ओके नहीं, लेकिन डायरेक्टर्स रिपोर्ट तो मेरा बन गया, जैसे मेरा द मोमेंट अकाउंट इज अप्रूव, डायरेक्टर्स रिपोर्ट बन गया, तो वहां पे तो फिर हमको रेफरेंसिंग देना पड़ेगा। नहीं, वही मैं बोला ना, उस टैब का लिंक डाल देंगे, एंड उस टैब में जब जब MGT 7 फाइल हो गया उसके बाद उस फोल्डर में बेसिकली डाल दिए, तो जो लिंक आपका है उस पर कोई भी जाएगा तो हर साल का MGT 7 उसे दिख जाएगा। ओके ओके सर, एक मैं आपका मिस कर गया था, MGT 9 के लिए कुछ आप बोल रहे थे कि इस बार कुछ अमेंडमेंट आया है, एक्चुअली एक बार फिर से रिपीट करेंगे जरा? 5 मार्च का अमेंडमेंट है, एज ऑफ नाउ फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21, अभी जो 2021 का बनाएंगे, MGT 9 इज नॉट एप्लीकेबल, MGT 9 एप्लीकेबल नहीं होगा सर। तो हम लोग को डायरेक्टर्स रिपोर्ट के साथ बनाना ही नहीं है उसको? नहीं बनाना है सर। ओके, थैंक यू, मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, या इट इज नॉट रिक्वायर्ड, या थैंक यू सर, थैंक यू। MGT 9 एज ए होल ये अभी हट गया, डिलीट हो गया। हाँ सर, अब नामो निशान मिट गया सर, बहुत कंफ्यूजन हुआ था इसको लेकर, बट फाइनली दे हैव डिलीटेड इट। सावरिया जी, एक क्वेश्चन हमारा और पूछना था, कहना जी। हाँ, ये था कि सर अभी जैसे हम ट्रांजैक्शन करें शेयर का, तो वैल्यूएशन के लिए कौन सी बैलेंस शीट चाहिए कि हमको 31 मार्च 2021 या 20? शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं सर आप? हाँ, शेयर परचेज कर रहे हैं, तो सर शेयर ट्रांसफर के केस में कंपनीज एक्ट में देयर इज नो वैल्यूएशन रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। वैल्यूएशन रिक्वायर्ड होगा इनकम टैक्स एक्ट में। तो सर इनकम टैक्स एक्ट में बोलता है कि सर ऑडिटेड फाइनेंशियल्स होना पड़ेगा, लास्ट आपका लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल्स। और सर अगर जो कि आपके अगर मार्च 21 का नहीं हुआ है ऑडिट, तो मार्च 20 के ऑडिटेड फाइनेंशियल्स को लेना पड़ेगा। और क्योंकि ड्यूरेशन आपका बहुत ज्यादा हो चुका है और देयर इज अ सब्सटेंशियल चेंज, तो उस केस में फिर सर आपको 21 का ऑडिट करवा के ही करना चाहिए। ठीक है सर। Yeah, thank you Mayur ji, it's a lovely session covering all the aspects related to compliances. काफी कुछ डरावना भी था, डरना भी था कि कैसे कैसे अपने compliances जो पुराने छूटे हुए हैं उसको कैसे अपने फुलफिल कर पाएंगे, और आगे अच्छा है कि आगे अपने कैसे इसको कंटिन्यू रखें, जो भी compliances है टाइमली वी हैव टू डू इट, एक चेकलिस्ट बनाकर उसको अपने प्रॉपर्ली क्लाइंट को थोड़ा सा दें, क्लाइंट को भी दें, अपने उसको प्रॉपर्ली फॉलो अप करके उसको कंप्लीट करें, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पेनल्टीज आर इवन पेनल्टी तो हमेशा से बहुत सारे रहे हैं, अब वो सब इम्प्लीमेंट हो जा रहे हैं, सबसे अब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, राइट। तो नाउ मतलब गवर्नमेंट अब काफी प्रोएक्टिव हो गई इस चीज में। कमल साडा जी, यदि आप लाइव हैं तो प्लीज प्रकट हुए, और कमल साडा जी, हाँ प्लीज। मयूर अग्रवाल जी हमारे साथ में, प्लीज उनको वोट ऑफ थैंक्स फॉर द टुडे सेशन, प्लीज ऑफर देम। थैंक यू संदीप। मयूर जी को तो मैं बराबर सुनता ही रहता हूँ, इनका काफी कंपनीज एक्ट के ऊपर में बहुत अच्छा कमांड है। और ये आज का ये जो टॉपिक था, एक्चुअली मेरे को पूरा, मैं सोचा कि उन्होंने आगे जो स्पीच दिया वो उसी के ऊपर होगा, लेकिन आज जो कंप्लायंस के ऊपर बोले बहुत ही अच्छा। ये हर मतलब जो है प्रैक्टिशनर के लिए मतलब बहुत जरूरी है कि कहाँ कहाँ फॉल्ट हो रहे हैं हम लोगों का, कहाँ कहाँ हम लोग चूक कर रहे हैं। तो ये मयूर जी की तरफ से बहुत ही अच्छा डेलिब्रेशन रहा, और इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद। हम आगे इसके ये हमारे एक मोमेंटो है मयूर जी,
जो सेंट्रल कनाडा की तरफ से आप टोकन ऑफ लव, तो आप इसको अपना ई लाइब्रेरी में रखिएगा। थैंक यू। Thank you so much. Thank you, Mayurji, for your nice session, for your, and thank you all the delegates for attending the session. Because of you we attend, we organize this type of seminars. Please be with us. Join live in the session. Don't wait for the YouTube channel to see after. तो लाइव में आप रहेंगे तो इंटरेक्ट कर पाएंगे, अपने स्पीकर्स भी इंटरेक्शन चाहते हैं। लास्ट हरिराम जी यदि कुछ ऐड करना चाहें, आफ्टर दैट वी विल क्लोज द सेशन। म्यूट है सर आपका। Very nice session, good deliberation. Both the speakers, I had been most of the time listened both the speakers, but you know, due to one reason or other, I could not concentrate 100%. But most of the thing which I have heard for both the speakers was certainly a need of the hour. And congratulations the team CKCSC for making the program success, and congratulations and thanks to both the speakers, Mohit ji and Mayur ji. Thank you, sir. Thank you. And Thank you. please keep on doing such a programs in the times to come. Thank you, sir. Thank you all the delegates. Thank you the speakers. And now we are closing this session. Thank you.